Ladies and gentlemen, boys and girls, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर दोबारा से ROG Showdown सीरीज बाय ROG इंडिया एंड इंडिया में। मेरा नाम है दर्शिता। मेरे साथ जस्ट पे आज दोबारा से अहाना आपको देखने को मिल जाने वाली है। एंड गेस व्हाट, वी आर लाइव फ्रॉम चंडीगढ़ राइट नाउ। बहुत ज्यादा मजा आने वाला है अहाना। बट आप बताइए कैसी हो आप? हाउ हाई आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुडेज डे? Well, today's day started off very well. Late uthi main, and then I got aloo ka paratha from you. The day has started with very high expectations for me for whatever is coming next, and it being Chandigarh, it's gonna be a great day. It definitely is going to be a great day. But चलेंगे डायरेक्टली प्राइस पूल की तरफ बात करेंगे किस चीज के लिए ये टीम्स इतना ज्यादा फाइट कर रही है। टोटल प्राइस पूल ऑफ 50,000 लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां पे पहले प्लेस को मिलेगा 35,000 एंड द सेकंड प्लेस गेट्स रिवॉर्डेड एज 15,000. I mean, that's a lot of money for one day tournament, isn't it, Ahana? Absolutely, and that too just gets divided between two people in a team because this is wingman series and हर एक team में बस दो ही लोग हैं. So I guess this is one of those opportunities जहाँ पे आप काफी कम रिस्क के साथ में काफी ज्यादा गेन करने के लिए चांसेस स्टैंड करते हैं एंड हर किसी को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेना चाहिए. डेफिनेटली 2v2 के ये मैचेस हमें देखने को मिलने वाले हैं। अगेन एक्साइटमेंट है बिकॉज पहला मैच दिन का हम यहाँ पे विटनेस करने वाले हैं। अब ये क्लोज जाएगा या फिर वन साइडेड डोमिनेशन जाएगा, ये तो हम जब मैप में चलेंगे तभी पता चलेगा। बट आई गेस अकॉर्डिंग टू लीक्स हमें ये पता चला है कि जो पहला मैप हम देखने वाले हैं वो इनफर्नो का रहने वाला है। सो दिस मेक्स मी मोर हैप्पी अगेन बिकॉज वी टॉक्ड अबाउट इट राइट। इनफर्नो एक ऐसा Yep. मैप है जो कि काफी ज्यादा पसंद किया जाता है प्लेयर्स की तरफ से, एटलीस्ट इन दिस विंगमैन सीरीज एज कम्पेयर टू द कॉम्पिटिटिव। बट चलेंगे डायरेक्टली मैच की तरफ। आई गेस वी आर ऑल सेट, वी आर ऑल रेडी टू head in the game itself. So Anna, pistol down, over to you. Well, I mean, it being Inferno, I'm already having high hopes with the teams क्योंकि Inferno is one of those maps जहाँ पर काफी ज़्यादा control आपको मिलता है from both the sides and it's very single single dimensional when it comes to the execution. So I guess teams को maps की knowledge होना यहाँ पे काफी ज़्यादा important हो जाने वाला है. But let's see how Cashgo is gonna approach the situation because all Arcane Aces has to do is wait for the arrival of Cashgo. That's gonna be true. I still feel कि सिटी साइड पे काफी ज्यादा फेवर्ड रहेगा अगर मैं सिर्फ विंगमैन सीरीज की बात करूं। बिकॉज अगेन आप अपना True. पोजीशन होल्ड कर सकते हो, आप या तो पेट होल्ड कर सकते हो, अंडर बालकनी होल्ड कर सकते हो, साइड के अंदर जो निंजा स्पॉट है वहां पे भी होल्ड कर सकते हो। आप वेट कर सकते हो कि जो टी साइड के प्लेयर्स है वो अप्रोच करे साइड के अंदर एंड दे वॉक इन योर क्रॉसेस rather than you being a lot more aggressive. But हाँ, if at all the sides of Arcanesis are way too confident on their aim and वो जानते हैं कि वो duels लेके उन्हें जीत पाएंगे, तो I guess they can move further with going on with the fights. And I guess वो expect नहीं किया जाएगा from the side of Kashgo as well. So let's see what the plans are and what the strategies are coming up from both of these ends. एब्सोल्युटली. साइट ए जो रहता है इन्फर्नो का विच इज़ जनरली प्लेड ड्यूरिंग द विंगमैन सीरीज, आई फील लाइक इसमें जो अपार्टमेंट्स का यूजेज है वो काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द टेररिस्ट साइड एंड जो सिटी साइड रहता है उनकी तरफ से वी डू सी अ ग्रेट होल्ड कमिंग इन एंड जो क्रॉस फायर्स क्रिएट होती है स्पेसिफिकली फॉर द अपार्टमेंट ड्रॉप और द पुश कमिंग इन फ्रॉम द सेम एली, वो बहुत ज़्यादा एक्शन प्रोवाइड करती है. बट if the terrorists decide to go completely on the opposite side, then I think they have a chance of isolating the fights a little better for the series. Yep, that's gonna be true. I mean, honestly, जितना भी हमने अभी तक इन्फर्नो देखा, हमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि अपार्टमेंट का इतना ज्यादा यूज नहीं किया जा रहा है प्लेयर्स की तरफ से. दे आर True. ट्राइंग टू अवॉइड दैट पोजिशनिंग कम्प्लीटली एंड वो सिर्फ मेन से साथ में they're just trying to stick together and push through the site. They trying to make their way inside the site, bomb plant कर रहे हैं, प्लांट खेलने की कोशिश कर रहे हैं. बट हाँ, जैसे कि आपने कहा अपार्टमेंट्स का जो यूज अगर वो किया जाएगा तो आई गेस इट विल गिव देम मोर स्पेस बिकॉज अगेन वो इंपॉर्टेंट रहने वाला है. वो क्रॉस को अगर आपको तोड़ना है तो आपको वो फ्लैशेस, आपको यूटिल्स चाहिए रहेगी. आपका जो एक फ्लैश आएगा जो पिट के एरिया को आइसोलेट करेगा या फिर अंडर बालकनी के एरिया को आइसोलेट करेगा एंड फिर आपका टीम पे उससे फ्रैग निकालेगा, तो आई गेस वो चीजें काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगी
राउंड्स बिल्ड अप करने के लिए. एंड ऑल्सो the fact that this is a best of one series, right? You don't have any other chance here. If you lose this match itself, the storyline is done. There's no other chance that you get in the Exactly. lower brackets or something like that. So it's a do or die either ways until and unless you reach grand finals. एग्जैक्टली एंड वो भी इतने कम राउंड्स का रन रहता है ये लाइक 9 राउंड्स विक्ट्री एंड देन यू कैन लिटरली एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज द विनर्स सो कहीं ना कहीं जो रूम फॉर एरर है वो काफ़ी कम हो जाता है एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री भी बहुत स्लिम हो जाते हैं यू हैव टू बी गुड एवरी सिंगल राउंड यू वॉक इन क्योंकि हर एक गलती इतनी ज़्यादा पनिशिंग होती है बिकॉज एवरी सिंगल राउंड इज मैटरिंग सो मच हियर कम बैक वाली जो स्टोरीज हैं कम बैक वाले जो चांसेस है उनका अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम हो जाता है इन द विंगमैन सीरीज Yep, that's going to be true. I mean, हमने वन साइडेड डोमिनेशंस काफी ज्यादा देखे हैं, राइट? हम लोगों ने फर्स्ट डे एंड सेकंड डे जब हम बात कर रहे थे आरओजी शोडाउन सीरीज की, तो हमने वो वन साइडेड डोमिनेशंस देखे. हाँ, शुरुआती में शायद टीम ए राउंड्स नहीं निकाल पाती थी, बट जब टीम बी की तरफ से गलतियां होती थी तो उस पर कैपिटलाइज करके जिस तरीके से राउंड निकाले जाते थे, कहीं ना कहीं पे वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बन जाता था टीम्स के लिए. एंड इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा अगेन, बिकॉज प्राइस पूल की बात कर ली हमने. हमने ये भी बताया कि ये बेस्ट ऑफ वन सीरीज है, बट अगेन टाइटल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. Because here it's not that you एग्जैक्टली are going up against the players on the same level, right? आपको opportunity मिलता है कि आप you never know if there is an experienced competitive player around you who you are competing against, and you get a chance to learn so much from that man. So yep, you have a lot to learn as well, you have a lot to earn as well at the same time. So ये चीजें बहुत ज्यादा matter करेगी at least in the long run. Absolutely. And the best thing is that ROG Showdown series keeps happening one after the other. This is the second Yeah. time I am getting the chance to cast it. So I'm pretty sure अगर आप एक बार खेल रहे हैं and you're not getting the result that you expected, watching the stream and like figuring out exactly what the other team did right to win it would be a great point to start at because like this will happen again. This will definitely happen again and you can get yourself another chance to go ahead and seize that victory. It's pretty straightforward, I guess. Yeah, that's gonna be true. But also, again, it all comes down to the map detail looks like, because we know, right, grand finals, we are gonna witness a best of three. The best of one lies till the Yes. semifinals itself, and when we get the two teams for the grand finals, we witness a best of three series. And out of the four maps that we have for the Wingman series, there's just one single map that we are not able to see. So again, Inferno, Vertigo, Nuke, I mean, all these maps. You've seen it happening again and again, back and forth. And Overpass is that one map I still feel that the players love the most. लोगों को पसंद है, I guess, Overpass and Inferno में खेलना. If I at least compare it to, Nuke and Vertigo. Yes. But which would be your pick अगर आपको pick करना होता for 3 maps out of this 4, which one would you drop? I would probably drop one out of Nuke or Vertigo. And I'd still go with Vertigo though. I'd play Nuke maybe as the decider one and Inferno Overpass as the first and the second. I'm pretty confident that I would end it with a 2-0. So yeah, I know I have no need to play Nuke. Well, that's very confident as well as scary at the same Yeah. time. But yeah, I would probably drop Nuke instead of Vertigo though because I don't like those rat plays. It's very sneaky and you have to hold a lot. I am that aggressive kind of a person who just wants to barge into action immediately. So even though Vertigo does not give as much opportunity for it, but the verticality of the whole gameplay and having two different levels to play at just makes it slightly more appealing to me compared to Nuke. But then again, the first two maps are gonna be Inferno and Overpass without any doubt, without any discussion on that one. I think everyone agrees that Inferno and Overpass are just the better maps when it comes to Wingman series. mean, I would really agree when it comes down to Wingman series, as you said, right? Because when we talk about the big, large picture out there about the competitive scenarios going on out right now, I would say players have started to hate Inferno. Honestly, after all the changes that CS2 has made in terms of Inferno, people are double thinking their choices. I mean, if you remember back then, the good old times of CSGO, we used to see players playing a lot of Inferno, and the only thing that we used to witness was the banana fights. But now that Yes. there's a lot more changes coming in the map itself, I guess players are finding other opportunities rather than Inferno itself. They are maybe going in for Overpass, maybe going in for Nuke. Mirage is coming into the picture as well. So there's a lot more exploration that the players are doing right now, and I'm not sticking back to that Inferno meta anymore. That's true. And I am pretty excited about the Mirage inclusion because, to be honest, I have always loved the map. And to be very honest, being able to see it come that much in action now on just makes it even more interesting for me to go ahead and watch CS2. However,
we're still not going to be seeing it here in the Wingman series, but the Wingman series does have a lot of its own perks. One of them being that there's high pressure at Yeah, all times, which is so fun for us casters. We find excitement and enjoyment in other people's despair. that was harsh, but it was true though. I mean, yeah, at the end of the day, when it all goes down to a 2v2, which is converted down to 1 versus 2, imagine both the players are 1 HP, but they PQ together. There's a lot of pressure. I mean, your teammate is just, communicating and saying that both of them are 1 HP. That's an easy clutch for you. Go ahead, my man, you can do this, do that. But little do you know that if the double peaks come into the play, you are done. It's very difficult for you to survive in that situation. Also, the ninja diffusion's coming in with the help of diffuser kit. I mean, we know Yes. it just takes 5 seconds, right? So again, a perfect smoke and a ninja diffuser. You never know if you are able to play around the game with your opponent's mind as well. So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे हम बात कर सकते हैं. But I know you guys are waiting for us to start the match. We will soon be in the map of Inferno itself. A small technical issue that we are trying to solve so that we can have a flawless experience overall. Exactly. I mean, we want everything to be fair as well as on spot when it happens, because Yeah. you deserve the best. We're gonna bring you the best, just like the casters. है ना दर्शिता? All right. All right. But again, yeah, Inferno is the map, ladies and gentlemen, that we are going to witness. And also, we have a lot of good teams coming up in this tour. I mean, I just heard previously when we were talking and having a conversation, I heard about this team, Old Man and Young Man. And guess what? They are back again. Yes. We'll be witnessing them play today in this tournament. And it is going to be fun because I still remember you were saying that भले ही वो पिछली बार टूर्नामेंट नहीं जीते थे बट वो बहुत लोगों के दिल जीत के गए थे. So this time over, Yeah. I mean, I did not get an opportunity to cast the previous ROG Showdown series, but this time over, when I witnessed them live on my screen, quite excited to see on what they serve as well. Ladies and gentlemen, thank you for having so much patience. We are back again in the actions, starting off with the knife round itself. I mean, that's the most amazing part. But wait, what crashed at both of them? My goodness. Well, he has got his skills with the knife, but we gotta see what he's gonna be able to do with the guns. That's where the real game will start, right? Yeah. Hmm. A For timeout now, already. yeah, exactly something I was just about to say. Initial pistol round. Now this is going to be very important, honestly, because right, you get the pistol round for yourself. You don't have an advantage, but again, you have that confidence, and you can, of course, upgrade your weapons in whatever you want. So it's going to be important. But you know what? My main focus is going to be the amount of util invested by both of these teams because previous 2 days we have seen a lot of players coming right in front of our screens, but the investment of utils in terms of capitalization on site or entering the site was kind of low. So again, I'm quite interested to see if they bring on something really interesting for us. Well, we'll soon find out what's gonna happen on this map, because to be very honest, I am excited to see what's really gonna happen, because again, I do want to see a lot more use of the apartments, that as we already discussed. I do want to see the CT side also being a little more passive, because so far what we've seen, we've generally found teams who are slightly more aggressive want to just go ahead and take the fights themselves, and being on the city side as well, they're mostly just marching forward and taking the fights instead of waiting for the terrorists to come in, and the same thing happens even now. It's gonna be true, but I guess a small difficulty again, ladies and gentlemen. We are extremely sorry for that. I know you guys have been waiting for a long time now, but just trying to fix everything. Again, as I said, right, give you guys a very flawless experience. The way it all started, Ahana, I mean, पिछले राउंड नाइफ्स की अगर मैं बात करूँ तो एक ही प्लेयर ने Yes. दोनों भी नाइफ्स किए थे. It was quite interesting to watch again, but देखना ये कि अब ये दोनों टीम्स क्या करके जाते हैं, because again been talking a lot about it, right? This is a best of one series at the end of the day. Yes, and it does seem like there's a lot of potential from the side of Kashko, but we'll still have to see the whole match unfold.
Obviously, that was just people having fun around there, in which I went ahead and made that statement. But you know me, I am that aggressive person. I'll just go ahead and be like, yeah, this is what I think. I mean, you are a W player. Oh, very much. My keyboard does not have any other keys. I've binded every single key to moving forward. We have seen a lot of W plays. I mean, the previous day I could remember a lot of Ws that you've seen in the map of Overpass. I remember it was all dry peaks, honestly, but again, it did not matter because those Ws were legit getting them rounds. At the end of the day, it's Exactly. it's the amount of rounds you get that matters the most. Does not matter even if it is a dry peak. You are getting the rounds, you are getting rewarded. I guess that's what matters the most. Yep. If the W is getting you a W, why not use it? Why not? Why not use it? I don't have that same fate though. Every time I try to W play or even ASD, anything, I play anything, I lose. But I then hunt for great teammates who can carry me. Definitely love to carry you. But again, I'm just looking forward on what the strategies are from both of these teams again. I mean, not just both of these teams. Looking forward to the bigger picture right now. I'm looking forward to those Yes. players who would make us wonder on what exactly is happening down in this match itself, because it's not the first time this is happening, right? We've seen this happen before as well. These players who have a great experience in terms not just of this game, but in terms of the strategies, in terms of the overall, I would say, the lineups as well. Because right, CS2 more or less is based on the amount of lineups and it is going to be very, very important for you to know them. So, one of your teammates can go ahead and capitalize on the smokes, on the utils the other teammates is giving. It's going to be so important. Absolutely, and that is why it is Wingman series. Like one person is supposed to be watching your back while you take all the action into your hands, and then once you're dead, you can always be like, "See, I've been carrying you for the last 4 rounds. This is your time to shine. Please do something." And then they can die and prove you wrong. That's how wingmen are. That's why I have a wing woman instead. I can rely on her. Definitely wouldn't. I would perfectly clutch the round and get it for my team because Exactly. it's a 2v2, right? When it all goes down to one last remaining player, it more feels like a solo responsibility at the end of the day. You have no other options but to maybe be very, very calm and make sure that your aim is just doing wonders out there. Go gun blazing towards your enemies and get the round. That's more or less about it. But again, both of these teams, they are prepared. I mean, even they are waiting right now, like just like us and the audience, even they are waiting for us to get the game started. But I guess we finally are in the game, ladies and gentlemen. Without any delays, we will start straight up. We have the sides of team ACE on the CT and team KGO on the T side. Well, the third time is a charm, and this time around, I do feel like this is gonna be the real thing happening. The apartments are getting used, and there is capitalization on that as well. Well played, but the trade comes in right on time. This last fight is gonna decide who gets this pistol round. Good start. Good stuff's coming up from the sides of team KGO. We all got the very important flag, I would say. The trade was there, but once again, it was the counter trade coming up from his teammates. And now we have the sides of KG on a great advantage with Adi investing onto his weapons as well. Will be a bit more aggressive. Prashant trying to sneak in. Will be finding one, finds the second one as well. Gets the second round on board. We'll start 2-0 is what the scoreline looks like. Prashant is going nuts all over this. He has both the frags in his hands the minute he starts off into the round. I mean, KGU is showing a lot of confidence as well as a lot of capability to actually turn this around in their favor. But ACA, they'll have some hard work to do. It's going to be a crucial round for them, honestly. Trying to march in once again. Finds one, gets traded. Nightmare finds a perfect trade, but Adi leave him to touch this out. Question, another perfect angle to be into. This 1v1 is going to be very crucial. Adi just right around the corners, not really sure on where to peek in. Nightmare knows. He just needs to wait for another perfect time to pull out the util. Just trying to go in for that Molotov, gets caught off guard. Gets taken down, and that's going to be Arcane with the very first round, 1-2.
Adi got caught off guard. Nightmare had the right timing here. Perfectly made sure how to convert this round into their favor, and now with the tactical timeout, I think they're going to be figuring out how exactly to keep mounting onto this lead. It was a very crucial round, as you mentioned, and कहीं ना कहीं इस राउंड की जीत उनको काफी ज्यादा एक कॉन्फिडेंट स्टेज पे जरूर से लाके रखेगी, बट इफ दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग अप द इक्वलाइजर देन चीजें हाथ से फिसल सकती है. हाँ वो that's going to be so, but for now टाइम आउट लिया गया था आरके नेसेस की तरफ से. That's another timeout coming up from Pashko. My goodness, this just feels like a never-ending love story of the tactical timeout between both of these teams. But again, 1-2. मैं अभी भी कहूंगी कि शुरुआत काशको ने जिस तरीके से की थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी. And Arcan Aces, they were not able to hold back. But as soon as the third round came into the picture, that's where Arcan Aces, they were able to get that round, which was very very crucial. They had to had their they had to have their rounds on that round itself, because again it was very very important for them. And if at all ये round भी अगर काशको निकाल के जाती तो difficulties बहुत ज्यादा होती. बट चलिए आगे बढ़ेंगे सीधे फोर्थ राउंड की तरफ. एंड still excited to see what the plan is. Initial molly coming up from the sides of ACA though, to stop any kind of approach from the sides of KGO. Very aggressive angle as well coming up from the sides of Nightmare. Now smoke to block the visibility completely. Now this is a good usage of util, but again as I said, right, Pure finds one onto Nightmare. Letty finally finds one onto Pure as well, but the job is not yet done. Goes down to a 1v1 between Adi and Letty though. Body goes in. Perfect, but Letty. A perfect headshot. Crash gets taken down, and that's going to be an equalizer. Beautifully executed from the side of ACA. This was very important for them to go ahead and get the equalizer so that यहाँ से अपनी एक lead establish करना शुरू कर सके. As mentioned before, बहुत कम room of error रहता है यहाँ पे, and they have minimized it. Actually, nullified it, to be honest. Yep. They're gonna have an easier run from here. That is true. For now, again, a good hook. Oh. My goodness. Not the denies, but the leads. Wow. That just won both of these players, and that's going to be the third one. Before even I could, check the minimap on what is exactly going around in terms of the positioning, Pure was able to shut both of them down. That's going to be the third one for the sides of Kashko. 3-2 Ahana. Yep, Prashant has been able to secure 7 frags for himself, while the opposite team completely has only acquired 6, both of them together. So, like, he's definitely showing a lot of caliber, but then the number of rounds in his favor needs to improve for him to actually feel, confident enough to have this win. Oh no. Wow, okay. Nightmare very well isolated the fight, but won't be able to last long. Prashant with the last frag. 2-4. Good advantage once again. It all started with 0-2 in favors of the side, in favors of team KGO. ACA did find 2 for themselves as well, equalize the scoreline, but once again KGO has a great lead and has managed to take more 2 away from the sides of ACA. फिलहाल के लिए अगर बात करूँ तो they are slowly and steadily trying to make a move. To find this one, will he be able to? Yes, the answer once again. All goes down to one last remaining player, Nightmare. Not really sure will he be able to survive. No, it's the answer. Crash finds him. 5-2. More or less, it seems like KGO, they've read their opponents well and good, and they know what to do, what can be done. The util is also looking great from their end. That's true. We do have quite some util coming in from the side of KGO, which cannot be matched from the side of ACA, obviously, with the economy that they have. It's going to be crucial for the side of ACA to find a way around the weaponry and the aim game. This will have to turn into a brain game for them to be able to secure themselves a position which can, result into a positive outcome. Yeah, that's going to be true. Another match pause coming in. All right. Be waiting for the actions to resume back. But for now, I still feel Kashko has a great lead. बहुत ज़्यादा अच्छा advantage है उनके ऊपर. And also, the fact that they are on the T side right now. अगर first half में T side पे इतना अच्छा lead निकाल के Kashko जा रही है तो
going down to the city, it is going to be easy as compared to the T side. We again know, right? We've talked about this before as well. Inferno के मैप पे अगर आप बात करोगे तो आपका सिटी साइड आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देगा, स्पेशली on the A side itself. So it's Yeah. going to be very difficult. Arcan Aces, they need to get the last round at least before the swap so that they can maintain the scoreline, or if at all it is a 6-2, then it's going to be very, very difficult. Exactly. I mean, at least ये round मिलने के बाद में they can hope for the pistol and the consecutive so that they can at least equalize the numbers. But अगर ये round भी हाथ से निकल जाता है, then pistol and उसके बाद वाला round जीतने के बावजूद 2 rounds का gap रह जाएगा ACA and Cashco के बीच में. So Arcane Aces definitely have to give their all to this last round of the first half. But I guess it's still gonna be very, very heavily dependent on how they decide to execute this. Yep, that's going to be true. Prashant, is he searching for any like lineups or something? I mean, जितनी बार भी हमने ये 2v2 के matches देखे, I've always wondered if these players have found that perfect lineups, because yes, some of them have found it and they're really good, but when it comes down to that one side domination from these players, it just seems to be so difficult. For now, ladies and gentlemen, I know you guys are waiting again, but it's just a bit of an information that we are also waiting from another end on what exactly is this pause all about. We'll soon let you guys know as soon as we get an update on the same. But for now, we will soon be in your city. You never know. We've had a lot of ROG, showdown series planned all across. You can check with us on our Instagram as well, at the esports club, and you'll get all the information. If you guys want to come register yourself and play, you can follow us on our Instagram, on our socials, so that you get completely updated on what is exactly happening around and where you guys can register. Exactly. I mean, I would definitely, want to keep myself updated with every single event like this happening in my city. It's a whole different thing that I hardly get to go to some because Darshita keeps pulling me in to cast with her. It's all her fault. I mean, okay, it's all my fault, guys. Okay, but But like, yeah, either ways, I mean, teams are waiting, so are we, ladies and gentlemen. I mean, I am extremely sorry. We apologize for all these delays happening, but there are certain things which can't be controlled, as the aggression coming off from Ahana. But for now, ladies and gentlemen, we will be going on a quick short break, and we'll see you guys around with more information and all the matches in a very short break. So do not go anywhere, stay tuned, and we'll be right back.
स्वागत है आप सभी का देवी और सज्जनों फिर दोबारा से ROG Showdown सीरीज 2024 बाय ROG इंडिया एंड इंटेल में। मेरा नाम है दर्शिता एंड मेरे साथ दोबारा से हाना जुड़ती भी एंड वी आर बैक अगेन इन द एक्शंस। यू नो थोड़ा सा गैप हमने जरूर दिया था टू जस्ट फिक्स एवरीथिंग एंड गेट बैक स्ट्रांग। अभी आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम्स आने वाली है। सो हाना, नाउ दैट वी आर बैक अगेन विद अ 2-5 स्कोर लाइन, व्हाट डू यू थिंक? क्या ये जो आखिरी राउंड है ये ACA निकाल पाएगी? वेल होप्स तो है मुझे कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुआ हो ड्यूरिंग दिस ब्रेक, लेकिन अगर मोमेंटम अभी भी केजीओ के फेवर में चलता रहा तो फिर एसीए के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाली हैं। एंड अगेन एज यू मेंशन सीटी साइड पे जाने के बाद चीज़ें और आसान होंगी केजीओ के लिए, बट विथ दिस विन दे हैव जस्ट मेड देयर होल राइड बटरी स्मूथ। दैट इज रियली सो ट्रू। 6-2 के हाफ से पहला जो 6-2 के स्कोर से जो पहला हाफ है वो यहाँ पे खत्म किया उन्होंने। सो अगेन गोइंग डाउन टू द सेकंड हाफ ऑन द सीटी साइड, एज मेंशन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। आल्सो द फैक्ट कि अगर वो ये पहला राउंड निकाल लेते हैं तो वो जो स्टैम्प है ना विक्ट्री का, यहीं से लगा के चलेंगे। बट देखना ये 3 राउंड केवल उन्हें चाहिए विक्ट्री अपने नाम पे करने के लिए, 9 राउंड्स टू द विक्ट्री। बट लेट्स सी, दोनों भी प्लेयर्स एक साथ आगे बढ़ तो रहे ना। Approach is going to be really good coming up from the sides of AC, honestly, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है। बट यदि का आप एंगल देखिए, he knows ओह there's one player नाइस। around. My goodness, one shot down, second shot down, and that's going to be the 7th one on board. KGO looking so strong. आदि ने कर दी है बहुत सारी बर्बादी, एसीए जस्ट डज नॉट हैव अ वे टू कम बैक इनटू द गेम नाउ। बेटर वेपनरी होगी अब केजीओ के पास में, एज वेल एज एक अच्छा फाइटिंग कैलिबर जिसका ऑलरेडी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आदि जस्ट गोज इन, वॉल्ट्स राइट इनटू द एरिया एज इफ इट्स अ बॉल पार्क, गेट्स हिज गेम डन। 7-2 KGO. Good stuff, good rounds coming up from their end. अब ये लोग काफी ज्यादा information prevail कर रहा है at the same time. प्रशांत को बहुत ज्यादा दिक्कतों में डाला. He's been brought down to 16 of his health and this can be a very easy kill. वरना नाइट का धीरे आगे बढ़ रहा है। यूटन का एक बहुत अच्छा यूज, बट as said वो मॉली ने काफी ज्यादा ऑलरेडी हेल्प कर दिया था। 1 for 1 ट्रेड आ चुका है, बट अभी it all goes down to Adi and Nightmare being the two surviving players. Who comes up on top is yet a question. Well, for now it feels like it's going to be Adi and the 8th one for the sides of KGO. Arcane Aces बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज में लग रहा है काश को। It just feels like they are one step away from the victory. एक केवल राउंड चाहिए उन्हें ये पूरा बेस्ट ऑफ 1 का सीरीज यहीं पे समाप्त करने के लिए। स्लोली एंड स्टेडली फिलहाल के लिए तो आगे बढ़ने का प्रयास जरूरी कर रहे हैं। देखना एक ही राउंड निकाल के जाता है। चलिए, पहला फ्लैट मिला वहां पे आदि को। All goes down to one last remaining player, Letty. #OG. निकालना पड़ेगा ये 1v2 अगर एक लाइफलाइन देना चाहते हैं अपने टीम को। It's going to be very very crucial, but the way he's trying to approach towards the side seems to be a bit difficult. Smokes to prevail any kind of vigil once again, but इसकी तरफ जिस तरीके से आदि ऑलरेडी मौजूद है, I guess he is expecting him to be right around the corner. Prashant right behind his back shuts him down, and that's going to be KGO, ladies and gentlemen. 9-2 के स्कोर के साथ पहला जो विक्ट्री है इस बेस्ट ऑफ 1 सीरीज का अपने नाम पे लिखी गई है वो। Absolutely, and the way KGO has played is pretty amazing. I mean, जिस तरह से बिल्कुल धोबी पछाड़ किया गया है यहाँ पर एसीए के प्लेयर्स को, that has been quite a spectacle, and it was worth the wait. Yep, that's going to be 2-9-2, यानी अगेन हम ये चीज बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा वन साइडेड ये मैच हमें देखने को मिला है। हाँ, प्रयास किया गया यहाँ पे आर्केन के प्लेयर्स की तरफ से भी कि वो कुछ राउंड्स निकाले या फिर कैपिटलाइज करे, बट जिस तरीके से आदि वहां पे खेल रहे थे, आई मीन just going in and blazing towards his enemies and was taking all of them out and done for at least that specific round. And उसके बाद तो I guess एक भी राउंड नहीं दिया गया when it goes down to the second half itself. एक भी राउंड नहीं दिया गया था केजी की तरफ से। एंड एज आई सेड राइट, सेकंड हाफ में जाके उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली थी। एंड वो चीज हुई भी। एंगल्स पे वेट बैक किया, इंतजार किया एनिमीज के अप्रोच करने का, एंड दे गॉट द विक्ट्री। सो हियर ऑन वी नो दैट वी ऑलरेडी हैव वन टीम हु हैज अप्रोच्ड टू द नेक्स्ट राउंड फॉर देमसेल्व्स। Absolutely, and I do want to see which the next ones are gonna be, because overall this has got me all hyped up already, all pumped up to see what's the next team gonna be and how they're gonna play and book their slots into the next round. Yep, that's going to be true. But for now, ladies and gentlemen,
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत ज्यादा स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी लोगों का आरओजी शोडाउन सीरीज बाय आरओजी इंडिया एंड इंटेल में। मेरा नाम है दर्शत एंड दोबारा से हाना के साथ वापस आ गए हैं हम आज का अगला मुकाबला देखने के लिए। एंड गेस हाना के पास मैप वीटो के ऑलरेडी इनसाइट्स है कि हम कौन सा मैप देखने वाले हैं। सो हाना, वुड यू लाइक टू शेयर बिफोर वी गेट इन द मैच इटसेल्फ? Well, I mean, you already know it. I already told you, but ठीक है, बाकियों को भी मैं ही बता देती हूँ. It is gonna be vertigo, and we're gonna have quite some fear of the heights here. देखते हैं कौन सी टीम actually यहाँ पर ऊंचाइयां छू पाती है. आई मीन डेफिनेटली, यू नो द थिंग विद वर्टिगो इज वो एक ऑलवेज डर रहता है कि अगर यहाँ से नीचे गिर गए गलती से भी एक मिस क्लिक की वजह से, तो फिर तो दिक्कत वाली चीज बहुत बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। बट हाँ, Yep. रेगुलर बेसिस पे ऐसा होता नहीं है ऑफ कोर्स। ये चीजें हमने ज्यादा होते हुए देखी भी नहीं, अनटिल एंड अनलेस पैनिक वाला सिचुएशन बहुत ज्यादा हो जाता है। बट दिस मैच इज गोना बी अगेन क्रूशियल। दोनों भी टीम्स कौन सी है बहुत जल्दी हमें हमारे स्क्रीन पे देखने को मिलने वाली है। बट अगेन आफ्टर विटनेसिंग इन्फर्नो, वर्टिगो वुड मोर बी लाइक अ सस्पेंस फॉर मी अगेन। देखना ये कि इस इंटायर मुकाबले में होता क्या है। Let's start things off. We have the sides of OGR going up against the sides of Team EP. Hmm. इस गेम में काफी ज्यादा मजा आने वाला है दर्शिता, because to be very honest, the way the whole situation goes specifically on Vertigo in 2v2 is much different than what you see in general games, because as you know, काफी सारी teams हमारे पास इन events में ऐसी आती है जो अपना नया नया पकड़ जमा रही होती है गेम पे, which are like very fresh out of the oven. एंड उन टीम्स के साथ जो ये बिल्डिंग से गिरने वाली प्रॉब्लम है ना, वो बहुत ज्यादा होती है. इट्स क्वाइट फन टू वॉच, टू बी ऑनेस्ट. Yep, that. Oh my god, Fox. I mean, हाँ वार्म अप ही था ये, बट स्टिल चलिए डायरेक्टली चलेंगे मैच की तरफ. ओरिजिनल गैंगस्टर गोइंग अप अगेंस्ट द साइड्स ऑफ टीम इजी पीजी. Dextro actually Fox against Shank. Okay, that's Shank, Arthur Pro, and Smoke. Interesting names and unique at the same time, difficult to pronounce, but okay. Let's see मैचेस में ज्यादा डिफिकल्टी करते हैं. फॉक्स बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो टीवन लेके आगे जा रहा है. देखना ये कि यार शॉट कनेक्ट कर पाएंगे. अभी इंपॉर्टेंट इनिशियल फ्लैग आएगा जी, बिल्कुल शंक की तरफ से आएगा. दैट्स शंकर that finds the initial flag. आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है डेक्स्ट्रो. यहाँ पे gets taken down from Shankar again. 2 for Shankar, and it's going to be the first round for the sides of OGR. वेल लेट्स सी किस तरह से ओजी अपनी ओवरऑल लीड को कायम करने की यहाँ पर कोशिश करेगी, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस सिचुएशन दर्शिता, ऑन दिस पर्टिकुलर मैप विंगमैन में फॉर सम रीजन इस एक मैप पे मुझे भरोसा तब तक नहीं आता जब तक कोई टीम अच्छी खासी 5 से 6 राउंड की लीड नहीं बना लेती. It's always dicey, it's always changeable, but what is not gonna change is Smoke's aim. He's just shifted the crosshair so properly. बेहतरीन. बिल्कुल 2-0 2-3 प्ले एज वेल. देखिए आप जिस तरीके से क्रॉसहायर प्लेसमेंट था वहां पे. बट चलिए आगे बढ़ेंगे अगले राउंड की तरफ. नाउ इट्स गोना बी एन इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल राउंड की साइड से टीपी. पिछले राउंड में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया गया था. ये मॉली बहुत ज्यादा पुशर से प्रिवेल करेगी. प्लस द स्मोक इज गोना प्रिवेल अ लॉट मोर ऑफ इंफॉर्मेशन. स्मोक, व्हाट्स द प्लान? स्लोली एंड स्टडली वो आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहा है वहां पे, बट लिटिल डज ही नो दैट व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग अराउंड. शोएब बिंदी का खेल बन गया है फिलहाल के लिए, बिकॉज अब देखिए स्मोक का पोजीशनिंग कहां तक वो आगे आ चुके हैं. फाइनली शंकर फाइंड्स द फर्स्ट वन ऑन टू डेक्स्ट्रो, एंड दैट्स गोना डिनाई द नंबर्स टू द साइड्स ऑफ ईपी आना. बहुत ही शानदार प्ले मुझे यहाँ पर देखने को मिला फ्रॉम द साइड ऑफ ओजीआर दर्शिता, एंड द वे they have split themselves and pushed towards the terrorist side itself. It's quite ballsy and gutsy, but it's also pretty bold, to be honest. Like मतलब I was not expecting कि ये successful हो सकती है, but then the way the aim game is going in from the side of OGR, it had to be. 3-0 का स्कोर ऑलरेडी हो चुका है. ओजीआर के पास एक काफी अच्छा लीड है. एंड नाउ ईपी उनकी तरफ से क्या प्लान रहने वाला है, बिकॉज लूजिंग राउंड्स बैक एंड फोर्थ माइट जस्ट गेट like we need to start things off. Find one a trade coming from the sides of Dexter, though 1-for-1 trade. बड़ा पोजीशन देखिए इस मूव का. He's right behind his enemy and little do Dexter expects this happening. वेपन चेंज करना है तो वो भी एक ऑप्शन रहेगा उनके पास, बट डेक्स्ट्रो उन्हें बॉम्ब प्लांट करना है अभी भी. आप देखिए वो पॉइंट की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं.
वेट बॉम्ब उनके पास है अभी भी, बट इज जस्ट सर्चिंग ऑल अराउंड द कॉर्नर्स टू फाइंड वेयर हिज ओपोनेंट्स इज। एंड आई गेस अब उन्हें पता है कि वो बैकस्टैप की तरफ रहने वाला है, बट स्मोक बहुत अच्छी तरीके से इंतजार कर रहे हैं। पेशेंस गेम बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है उनकी तरफ से। बट ये फ्रैग हो जाएगा, इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल रहेगा आगे। एंड कनेक्ट किया डेक्स्ट्रो को, एंड ये चौथा राउंड भी सिक्योर किया। स्मोक सीएस तो खेल ही रहे, साथ में दिमाग से भी खेल रहे अपने अपोनेंट्स के। इस तरीके से फ्लैंक किया गया यहाँ पे। 4-0 का ये स्कोर है। quite patient the gameplay coming in from the side of smoke because जिस तरह से इन्होंने अपने आप को ऑल अक्रॉस द मैप पहले तो रोटेट करवाया है एंड उसके बाद में उस जगह को कब रुक के होल्ड करना है इस चीज का भी काफी सही अंदाजा लगाया। अगेन स्मोक तो यहाँ पर डाल दिया गया है, अपने आप को कंसील्ड रखेंगे एंड ये लीजिए जाके 1 for 1 फॉर नाउ। शंकर आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है। शंकर वर्सेस क्यूबी फॉक्स, आमना सामना होगा जरूर। दैट्स गोना बी क्यूबी फॉक्स हु कम्स अप ऑन टॉप फाइनली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये राउंड एंड शंकर को डिनाई करके इजी पीजी पहला राउंड यहाँ से सिक्योर करके जाने वाली है। बट कंटिन्यूएशन में रखना पड़ेगा अब इसे, बिकॉज 4 राउंड्स ऑलरेडी सिटी साइड पे रह के उन्होंने निकाल लिए। सो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। एंड ये जो झटके दिए जा रहे हैं बहुत ज्यादा सताने वाले हैं। बट चलिए 4-1 अभी के लिए तो एटलीस्ट गुड लीड कमिंग अप फ्रॉम साइड्स ऑफ ओजी और but now what's the plan from EP is the question. Trying to go in for maybe a very slow approach, slowly and steadily climbing up the stairs. मुझे शॉटगन के साथ परेशान किया जा रहा है यहाँ पे। वो खिलाड़ी रहेंगे वहाँ पे, मॉडल एक को टेक डाउन किया बट चलिए दूसरे को सिर्फ डैमेज दे पाया वहाँ पे, क्योंकि फॉक्स की तरफ से ट्रेड आया जरूर। रोटेशन कॉल ऑफ किए जाएंगे। स्मोक को क्या कोई आइडिया है कि वो अब मिड की तरफ से भी शायद आगे आ सकते हैं? इस बार स्मोक को मेरे ख्याल से लग रहा है कि पुश चेंज नहीं किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ ईपी, बट लेट्स सी, थिंग्स हैवंट बीन एज इजी फॉर देम एज देयर नेम सजेस्ट्स। लेट्स सी इस बार क्या अपनी इस वन हिट वंडर को एक एक्चुअल कंटिन्यूअस सक्सेस में बदल पाएंगे या नहीं। कनेक्ट नहीं किया गया Okay. इस बार कनेक्शन में प्रॉब्लम आया। पर मैं अभी भी कहूंगी प्लान काफी ज्यादा अच्छा था उनका। वो झटका देना चाहते थे एक और बार फिर से, बट आप देखिए वेट किया गया, वो बैठा नहीं पहना वाला जो शॉट वो कनेक्ट करना चाहते थे। मैंने इसी के चलते दूसरा राउंड यहाँ पे टीम ईपी निकाल के जाएगी। बट अभी भी लीड फिर भी मैं कहूंगी ओआर के पास रहने वाला है। स्मोक राइट अराउंड द कॉर्नर ट्राइंग टू फाइंड मे बी वन। पोजीशनिंग अच्छा है, दोनों भी खिलाड़ी आसपास ही मौजूद है। थोड़ा सा बचकर खेलना पड़ेगा बिकॉज दिस टाइम अगर मिड की तरफ से अप्रोच लेने का जो डिसीजन है ईपी का वो थोड़ा सा भारी जरूर पड़ सकता है, बट नॉट द परफेक्ट ग्रेनेड। बाउंस बैक करेगा अपने ही टीममेट की तरफ। थोड़ा सा दिक्कत दिया जरूर फॉक्स को वहां पे, बट अभी भी होल्ड बैक किया जा रहा है। 60 सेकंड्स रिमेनिंग ऑन द क्लॉक, समय भरपूर है यहाँ पे ईपी के पास। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्लान आहाना? आई फील लाइक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डैमेज सोक इन कर चुकी है टीम। डेक्स्ट्रो की अगर आप HP देखिए तो 26 पर आप पहुंचे हैं। इट डज नॉट लुक वेरी फ्लैशी, इट डज नॉट लुक वेरी एफिशिएंट, बट देखते हैं ये जो प्लान्स में बदलाव लाए हैं इसका कितना फ़ायदा मिलने वाला है टीम EP को। बिल्कुल काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले चुकी है यहाँ पे द साइड्स ऑफ ईपी। 20 केवल सेकंड बचे यहाँ पे मिड की तरफ से फिर दोबारा मार्जिन करने का सोच रहे हैं, बट नॉट रियली श्योर कि एग्जैक्टली वहाँ पे चल क्या रहा है। बहुत ज्यादा समय ऑलरेडी ईपी ने ले लिया है एंड अब फास्ट अप्रोच की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा। ओजी को बस एक चीज का ध्यान रखना है, जितना ज्यादा हो सके उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आई गेस वो करने में ऑलरेडी सक्सेसफुल भी हो चुके हैं। इतना ज्यादा स्लो अप्रोच काफी ज्यादा प्रॉब्लम देगा ईपी को, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। एंड वही चीज होती है इजी पीजी आखिरी के 15 सेकंड में मार्चिंग करने का डिसाइड किया साइड की तरफ, बट दैट जस्ट डिड नॉट वर्क इन देयर फेवर। एंड शंकर उड़ते उड़ते नीचे गिरे हैं वो यहाँ पे। 5-2 का ये स्कोर है। ओजी के पास एक बहुत अच्छी लीड है अभी मेंटेन करने के लिए। यप, एंड कहीं ना कहीं ये जो आखिरी राउंड है फर्स्ट हाफ का, इसमें भी पलड़ा मुझे थोड़ा सा OGR का ज़्यादा भारी लग रहा है। बट लेट्स सी हाउ दे विल एग्जीक्यूट। काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन होल्ड की, डैमेज बहुत दिया है लेकिन प्लेयर डाउन नहीं कर पाए। अभी भी 12 HP पर डेक्स्ट्रो हैं ज़रूर। ये 1v2 आइसोलेट करना इंपॉर्टेंट रहेगा स्मोक के लिए। He gets the first, isn't ready for the second, and ये जो पलड़ा भारी होने की बात थी इसने भारी नुकसान भी दे दिया है। 5-3 का ये स्कोर लाइन could have ended with 6-2 स्कोर लाइन।
OGR को वो एक एडवांटेज Yep. मिल सकता था ओरिजिनल गैंगस्टर को, बट चले कोई दिक्कत नहीं है। इजी पीजी नाउ डाउन टू द CT साइड एंड वी हैव ओरिजिनल गैंगस्टर ऑन द T साइड। अब देखना ये कि जितना ज्यादा समय यहाँ पे इजी पीजी ने लिया था अपने T साइड में साइड पे मार्चिंग करने के लिए, क्या उतना ही समय OGR भी लेती है, या फिर यू नो वी आर गोना विटनेस अ फास्ट अप्रोच। मोर और लेस इट सीम्स लाइक अ वेरी फास्ट अप्रोच कमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ दीस प्लेयर्स डायरेक्टली trying to striking from the mid, but little the sides of EP have any idea what is the positioning। देखिए दोनों प्लेयर्स एक साथ मिड की तरफ से ऑलमोस्ट साइड के अंदर आ चुके हैं। पहला फ्रैग पहला इंपॉर्टेंट है, बट वो दोनों भी फ्रैग्स मिलेंगे यहाँ पे इजी पीसी को। 5-4 क्लोजिंग करने का ट्राई कर रही है, इक्वलाइज करने का ट्राई कर रही है इजी पीसी यहाँ पे। वेल इजी पीजी क्लोजन ज़रूर से कर रही है इस नंबर के ऊपर, लेकिन अभी भी एक राउंड का डिस्टेंस है ज़रूर। वेपनरी का एडवांटेज जो रहने वाला है उनके पास में, उसके चलते मुझे यहाँ पर उम्मीदें तो लग रही है इजी पीजी की एक फ्लैशी विक्ट्री के लिए। पर दोनों ही प्लेयर्स सिंगल एंट्री पॉइंट पे फोकस्ड नज़र आ रहे हैं। इस बात का फ़ायदा उठाया जा सकता है ओजीआर की तरफ से। That's gonna be true. They are trying to stick together honestly, वो साथ पे प्रयास कर रहे हैं वहाँ पे, बट चलिए पहला फ्लैग फिर से मिलता हुआ शक्कर gets taken down, it all goes down to one last remaining player, Smoke OG। बट देखिए फायदा अभी भी है स्मोक के पास, क्योंकि प्लेयर्स काफी ज्यादा लो है, ये टच कर सकते थे, बहुत ज्यादा क्लोज भी था ये Xbox। 18 HP पे barely survive कर रहे थे, but it all goes down to him clutching the round for his team। Equalization तक आगे लेके आ चुके हैं, the scoreline goes down to a 5-all। वेल इजी पीजी फाइनली अपने आप को एक रन फॉर द मनी पोजीशन में लेकर आ चुकी है। एंड ये जो अग्रेशन है क्यूबी फॉक्स का, ये कितना फ्रूटफुल है देखना पड़ेगा। ओह नाइस नाइस टच बैक फ्रॉम द साइड ऑफ डेक्स्ट्रो। ये तो खो खो वाली फीलिंग आ गई। Again goes down to 1 versus 1। Fox is very low, barely surviving, breathing। आगे जाएंगे फिर भी Fox वहाँ पे क्लच करके जाते हुए, ये चीज नहीं होनी देनी चाहिए थी। 5-6 बहुत अच्छी शुरुआत जो कि यहाँ पे मिली थी OGR को, बट जिस तरीके से इजी पीजी अब ये राउंड्स निकल रही है, थोड़ा डर सा जरूर लग रहा है फिलहाल मेरे को इन प्लेयर्स के लिए। देखते हैं कि क्या इक्वलाइज कर पाएंगे OGR। वंस अगेन मौका है उनके पास, वेपन्स का एक एडवांटेज भी रहने वाला है, स्टेज की तरफ से आगे आने का अप्रोच रहेगा, बट एक बहुत अच्छा होल्ड, बॉक्स का एंगल बहुत ज्यादा अच्छा था, उस पे शायद ही कुछ कर पाए, बट टेक डाउन करके इक्वलाइज कर जाएंगे। उम्मीदें बहुत ज्यादा कम थी इस चीज की, जिस तरीके से दोनों खिलाड़ी वहां पे मौजूद थे, बट स्मोक ने दोनों भी प्लेयर्स को टेक डाउन किया एंड 6 ऑल का स्कोरलाइन आगे लेके आ गए। Exactly the way Smoke has played in the last round, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो 6 राउंड इनसे छीने गए हैं वो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुई है। ये प्रदर्शन अगर कंटिन्यू रहता है तो फिर स्मोक की टीम को जीतने से रोक पाना मुश्किल रहेगा। एंड ये लीजिए कंटिन्यूएशन की बात थी, जीत एज वेल एज परफॉर्मेंस दोनों ही कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे रहे हैं ओजीआर के। दिस राउंड इफ आई टॉक अबाउट इट, दोनों ने वही पोजीशन होल्ड किया था जो प्रीवियस राउंड में होल्ड किया गया था, स्टेयर्स के एग्जैक्टली राइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ पोजीशन को होल्ड किया गया था, एंड आई गेस प्रीटी एक्सपेक्टेड भी था। चीज पे काफी अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। वंस अगेन मिड अप्रोच, आई गेस नो नॉट मिड अप्रोच, दो स्टेयर्स की तरफ से ही आगे बढ़ेंगे। तो अभी भी देखिए उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ पे प्लेयर्स मौजूद है कि किस तरीके से होल्ड किया जा रहा है। एंड स्मोक को देखिए आप, वो इंतजार कर रहे हैं, लिटिल डू डेक्स्ट्रो एक्सपेक्ट्स कि इस तरीके का कोई पीक आएगा स्मोक की तरफ से, बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने। एंड स्मोक माइट जस्ट फाइंड द सेकंड वन एज वेल। बहुत अच्छा एंगल है वो स्मोक का जो उन्होंने क्रिएट किया है। फॉक्स को देखिए पहले से 29 HP पे वो जिंदा है वहां पे। आई गेस दिस इज गोना बी द मैच पॉइंट राउंड फॉर द साइड्स ऑफ OGR। does seem like it कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत डैमेजिंग रहने वाली है सिचुएशन इजी पीजी के लिए, एंड दैट्स व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी। क्यूबी फॉक्स के खात्मे के साथ साथ मैच पॉइंट ओजीआर का आते हुए। डू यू थिंक देयर स्टिल अ चांस ऑफ कमबैक दर्शिता? I mean, wouldn't deny, yes, there is, but looking at the weaponry difference right now, feels like OGR यहीं पे इस राउंड को समाप्त करेगी। इस राउंड पे रिस्क करना उनके लिए बहुत ज़्यादा difficult हो सकता है। So let's see what the plan is like. For now, slow approach towards the mid again, trying to pinch down the enemies. I guess information already mentioned, but peek करना would not be the best decision. It's definitely not. दोनों भी players को take down करके 9-6 के score line के साथ ओरिजिनल गैंगस्टर जो कि यहाँ से ये मैच सिक्योर करके जाने वाली है। 9-6 का स्कोर लाइन, मैच काफी ज्यादा नजदीक है इफ आई कंपेयर इट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैप ऑफ इन्फर्नो। अगेन इंटरेस्टिंग भी था एट द सेम टाइम, बट अगेन वी नो राइट एट द एंड वी जस्ट हैव वन विनर एंड दैट्स गोइंग टू बी OGR।
यप, एंड ओजीआर ने जिस तरह से खेला है, कहीं न कहीं चेतावनी ऑलरेडी दे दी है बाकी की टीम्स को दैट दिस इज़ व्हाट्स वेटिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट राउंड एंड यू बेटर बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट्स कमिंग अप बिकॉज़ स्मोक द वे ही वाज़ प्लेइंग वाज़ प्रीटी आउटस्टैंडिंग एंड लाइक उनका जिस तरह से कमांड है अपनी मैकेनिकल स्किल्स के ऊपर, आई थिंक ही इज़ ब्लेस्ड। That's going to be so true. But right now, ladies and gentlemen, it's time for us to head towards another break. So, time at jayega, bane rahega. We'll see you guys on the other side. Is छोटे से break के बाद.
Hello Welcome and back, ladies welcome and back gentlemen, everyone to as we ROG. well, We are we in both seem sync. to be We're very, very twins. excited, Ahana. Yeah, we are. Definitely. But again, I'd like to welcome you guys once again back to the ROG Showdown series. And as we promised, we'll be right back after this quick short break. We are here again. Right now, we are going to go live with the upcoming match. But finally, Ahana, now that I know how excited are you, tell the audience as well on how excited are you. I was so excited that I took over you. Anyways, this is the match I've been waiting for since we did not even get into Chandigarh, okay? This is young man, old man playing against Z2. Hmm. Yep. Well, that's going to be ZBL going up against ZZZ, but for now, initial peaks come into the favor. For now, first one falls down, Silent finds another one onto Sky. Well, wait, that's Kami and Sky? Heard names if you They guys seem to be heard know these names. players. Yeah, we've seen them playing across, not wrong with the sides of diversity, esports. Well, okay, never mind. But for now, a good start for the sides of ZBL. They get the very first round for themselves, being on the CT side. They're gonna have a great advantage on. Well, that's true. ZBL do have a strong start for themselves, but as you mentioned, this is gonna be quite tricky to go forward with because I do feel like Triple Z is gonna get it much more easily, and we can see that coming in. But wait a second. Now Silent finds both of them though again. It's going to be an initial 2-0 start for the sides of Z Blue though. On the other side, Z Silent, they are still awaiting to start things off for themselves. Let's see if this buy rounds gets them something in return for now move towards the side and make their way inside, but that's going to be Tyler falls down. It all goes down to one last remaining player, Silent. 2 versus 1 will not be able to capitalize onto it. Gets taken down from Kami, and that's going to be the first one for the sides of Z Silent. Well, Z Silent has finally gotten their start into the game. एंड आई फील लाइक यहाँ से कैरी फॉरवर्ड कर पाना इस चीज़ को थोड़ा आसान रहने वाला है बट इट्स स्टिल गोना बी अ हार्ड आस्क बिकॉज जितना नाम सुना है हमने इनका कहीं ना कहीं उतनी डिलीवरी आने में थोड़ा टाइम लग रहा है आर दे वार्मिंग अप स्टिल दर्शिता Yeah, maybe feels like they still are warming up, but again, देखना ये है कि किस तरीके से आगे बढ़ता है फिलहाल के लिए टैक्टिकल टाइम आउट यहाँ पे लिया जाने वाला है फ्रॉम द प्लेयर्स ऑफ जी साइलेंट दे नो हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज अगेन चीजें उन्होंने स्टार्ट करी है टी साइड पे तो गोइंग डाउन टू द सीटी साइड इट इज कंपैरेटिवली गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर देम आई वुडंट से वेरी इजी बट अगेन अ बिट इजी एटलीस्ट फॉर देम बट वही है कि अब देखना है कि यूटिल का कितना परफेक्ट यूज करता है बिकॉज अब देखिए 4 फ्लैशेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं प्लेयर्स की तरफ से अब ऑलरेडी ऑल सेट टू just make their way inside Tarapel जाएगा जरूर Talent finds one onto Sky Kamina just finds one but shuts both of them down perfect bullets landing into the skulls of their opponents 2-2 an equalization in the early stages वेल जब भी इतनी जल्दी इक्वलाइजर आता है यू नो व्हाट हैपेंस दिस मींस द ग्रिप हैज बीन फाउंड एंड नाउ जेड साइलेंट माइट जस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो अहेड एंड कैपिटलाइज ऑन दिस लीड I do have more faith on the weaponry of Z Blue though. yep let's see if they are able to capture wait Silent finds the other one as well the grip seems to be slipping off Ahana as Ziblu finds the third one on board. This match seems to be a close one, honestly. I mean, these players have a great caliber and the way they are able to perform. Investments from both of these ends for now. Let's see if another equalizer comes into the picture. Well, that's gonna be the hope for the side of Silent Z, but Z Blue are gonna be wanting more for themselves. Does not happen, and the results are gonna be just as you said, an equalizer coming up yet again. Feels like Z Silent was just waiting for me to say it out loud so that they can equalize the numbers. And
We are back again, a 3-all scoreline. Honestly, this feels like such quick matches. I mean, look at both of these players from, Z's talent. All they're doing is trying to make their way through the monster right inside the site itself. Early on flashes, working one down low, created a lot of space. Already side काफी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं. Taylor का जो position है, already compromise हो जाएगा, but Mike Davis is Tyler. Perfect with the headshot. Kami finds one. 33 HP down. Will he be able to clutch this out for his teammate is the question. Frank is level best. वो जानते हैं कि snipers की तरफ ही वो खिलाड़ी मौजूद रहेंगे and clutch कर जाएंगे अपने teammate के लिए. चौथा राउंड निकाल के जाएगी यहाँ पे C7. Well, Z Silent and their hot takes are definitely turning out to be very successful for their side. However, अभी भी एक और equalizer के साथ first half को close करने का opportunity Z Blue के पास रहने वाला है. Let's see if they're gonna be able to capitalize on that. I do see a little bit more confusion for the side of ZBL compared to usual, and that has resulted in loss of one man. Silent has gone silent. Seems so for now. Tyler is the last one to survive. 1 versus 2 का situation है फिलहाल. Difficulties बहुत ज़्यादा होगी because again Sky and Kami दोनों भी खिलाड़ियों को face करना. Even if he takes down Sky, हमने Kami को clutch करते हुए देखा. We've seen him taking down both of these players, and now Tyler is barely surviving. 19 HP and a dream could not get it done, and the first half goes down to a 5-3 scoreline. पास के मुकाबले में आप देखिए Z Silent ने ना कि सिर्फ राउंड सिक्योर करा है, बट वो लीड के साथ टी साइड समाप्त किया. यानी अब सीटी पे जाके उनके लिए कितना ज्यादा फायदा होगा. एंड इफ एट ऑल उन्हें वो इनिशियल पिस्टल राउंड मिल जाता है, आई गेस वो सील द डील वाला सिनेरियो होने वाला है सी साइलेंट के लिए. Does seem so. Let's see if Z Silent are gonna be able to actually go forward with it, because ZBL की तरफ से भी retaliation काफी अच्छा है. This time around देखिए मॉली का इस्तेमाल करके already एक entry point को completely conceal कर दिया है. थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश की जा रही है इस गेम के पेस को. परफेक्ट एंगल टाइलर को टेक डाउन किया. आखिरी बचे हुए खिलाड़ी थे साइलेंट, उन्हें भी टेक डाउन किया एंड छठा राउंड सिक्योर करेंगे. जिस तरीके से वो होल्ड करके बैठे थे आप देखिए, न्यू व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन. क्रॉसहेयर में चल के आए वहां पे टाइलर, एंड जैसे ही वो आ गया रेस्ट इज गेट अ हिस्ट्री. 3-6, a great start in the second half for the side of C Silent again. 3 राउंड का डिफरेंशिएट ही नहीं है, बट एक बहुत अच्छा लीड भी है उनके पास. स्टोरी एंड स्टडली और केवल 3 राउंड चाहिए उन्हें इस मैच को यहीं पे समाप्त करने के लिए, बट एट द सेम टाइम जी ब्लू को और 3 राउंड चाहिए इक्वलाइजर आगे लाने के लिए. सो इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर बोथ ऑफ देम, बट लुक एट द यूटिल यूनिट्स एज वेल कमिंग अप फ्रॉम द साइड्स ऑफ जी साइलेंट. स्टोरी एंड स्टडली ट्राइंग टू पुश मॉन्स्टर्स. ऑलरेडी आगे आ चुके हैं शॉट की तरफ, शायद आगे बचाए. बिल्कुल दैट कुड बी द केस. 2 players right in front of them, बट चलिए अब इन्फॉर्मेशन है उनके पास पूरी की साइड पूरा ओपन है. दे कैन गो इन फॉर अ सेफ. वेल ये जितना सेफ होना चाहिए था उतना सेफ निकला नहीं प्लान, एंड कहीं ना कहीं प्लान हो भी नहीं पाया है. साथ ही साथ जान भी गंवानी पड़ गई है. वेपनरी का डिसएडवांटेज यहाँ पे भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया जी ब्लू को. Sadly, but things don't look good for the sides of Z Blue right now, Ahana. Because आप देखिए बैक एंड फोर्थ 2 राउंड्स गवा रहे हैं. फर्स्ट हाफ में 3 राउंड उन्हें लेने का मौका मिला था, बट उसके बाद एक भी राउंड उन्होंने अभी तक सिक्योर नहीं किया है गोइंग डाउन द सेकंड हाफ. हाँ, मॉली के साथ फिर दोबारा से उन्होंने वो एंट्री पॉइंट को पूरी तरीके से कंसील किया है कि एंट्री निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा. एंड आप फ्लैशेस भी देखिए उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए. दिस सीम्स टू बी सो डिफिकल्ट फॉर द साइड्स ऑफ Z Blue right now. Does seem so. Z Silent के लिए ऑलरेडी एक वॉक इन द पार्क जैसा सिचुएशन बन चुका है, एंड विद दिस दे आर गेटिंग एन एडवांटेज ऑन द मैन काउंट एज वेल. Yep. Silent being 1 the versus 2. only Silent. man remaining. Yep, exactly what I was about to say. आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है ये. 1 versus 2 का सिचुएशन है जो मुश्किल रहेगा. अगेन does have a great weapon to work around with. एक के साथ आगे बढ़ के अगर परफेक्ट हेडशॉट्स लैंड करते हैं ना तो शायद ये राउंड निकाल के जा सकते हैं. Well, let's hope for that, because कहीं ना कहीं हम भी चाहते हैं कि थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे. लेकिन ये जो डबल पीक्स यहाँ पे आने के चांसेस थे उसको आइसोलेट करने में कामयाब रहे हैं. इट इज गोना बी अ 1v1, लेकिन कामी फुल एचपी पे है एंड एक बेटर फाइट विनिंग कंडीशन उनके पास है जो कि वो पूरी तरह से सील भी करेंगे.
8-3 मैच पॉइंट फॉर द साइड्स ऑफ जी सैलेंट। साइलेंटली अपना पूरा जो काम है, अपना जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाते हुए देखने को मिला है आपको। फिलहाल के लिए केवल एक ही राउंड चाहिए उन्हें टू एंड दिस मैच हियर एंड हियर। क्या वो ये राउंड रहेगा, ये एक देखने वाली चीज रहेगी। चले काफी ज्यादा लो ऑलरेडी कर दिया जा चुका है, डाउन टू 80 ऑफ हिज हेल्थ। वो खुद सेल्फ जंप करके आई गेस नीचे 80 एचपी डाउन हुए, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए देखना ही है कि प्लान क्या है इस की तरफ से, बिकॉज ये राउंड बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा उनके लिए। Well, that's true. Z Blue prompt here. Every single thing is gonna count for them. So will the man count. क्योंकि कहीं ना कहीं वो advantage दे चुके हैं Z Silent को, and ये एक victory का start लग रहा है मुझे for the side of Z Silent. Yeah, more or less seems to be the case, and Sky through the smoke यहाँ पे Silent को take down करेंगे। 9-3 का ये Silent Z Silent जो कि है my bad, यहाँ पे ये मैच सिक्योर करके आगे जाने वाले। Z Blue की तरफ से कोशिश काफी ज्यादा अच्छी थी, बट चलिए 3 राउंड के अलावा सेकंड हाफ में कैपिटलाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था ना। हमने चीज की बात भी करी, राइट, भोपाल जैसे मैप में सिटी साइड पे आपको जितना एडवांटेज मिलता है वो काफी ज्यादा हद तक इनफ रहता है फॉर यू गाइज टू not just snatch away the lead but to win the match also, and वही चीज हमें देखने को मिली दोबारा से। Exactly, and यहाँ पे जिस तरह से performance आया है from the side of Z Silent, it's definitely looking much better than what we've seen so far in the day. So I guess we might have a potential winner in our hands. Yeah, that's gonna be true. But for now, I guess it's time that we head towards a quick short break, ladies and gentlemen. We'll see you guys around very soon. Until then, stay tuned and do not go anywhere.
एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर दोबारा से ROG Showdown सीरीज बाय ROG इंडिया एंड इंटेल में। मेरा नाम है दर्शिता। आना को फिर दोबारा से मैं लेके आ चुकी हूँ डेस्क पे आज के अगले मुकाबले के लिए, एंड ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज जिस टीम की बात आना हम शुरुआत से कर रहे थे, फाइनली उन्हें आज परफॉर्म करते हुए देखने वाले हैं। Exactly, and now it's finally time for young man, old man to be playing, and I guess everyone is hyped about this because हम इतनी बात कर चुके हैं उनके बारे में. So I would just want to go ahead and see that. But yeah, definitely that's going to be the case. But for now, uh, old man, young man going up against the sides of KG. Oh, that's going to be Kashko. Let's see who comes up on top. ओवरपास का ही मुकाबला रहने वाला है, लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रेट अप एंट्री लिया है ऑलरेडी। दोनों भी प्लेयर्स एक साथ आगे आएंगे वहां पे, टाइम को टेक डाउन किया, एंड इट ऑल गोज डाउन टू मास्टर फेला बीइंग द लास्ट वन टू सर्व। भाई इतना डिस्कनेक्टेड क्यों लग रहा है मास्टर फेला वैसे? मास्टर फैला अभी ब्रेक से लौटे नहीं है. फाइनली ही इज बैक इनटू द गेम. लॉन्ग रेंज पे पिस्टल फाइट लेने की कोशिश है, एंड ही एक्चुअली मेक्स इट वर्क फॉर द फर्स्ट वन. Could not carry that charm for long. Yeah, that's going to be true. 0-1, a good start coming up for the sides of KG. Honestly, ऐसा लगा कि जो मास्टर फेला इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड थे गेम से, स्पेसिफिक राउंड में उसके चलते कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम्स हुई, बिकॉज आप देखिए अकेले प्लेयर थे जो डिफेंड कर रहे थे उस साइड को, जो रोक रहे थे एनिमीज को अंदर आने से. सो कहीं ना कहीं पे इट वाज प्रॉब्लमेटिक, बट दिस टाइम ओवर अगेन. आप देखिए कितना ज़्यादा इजी एंट्री मिल रहा है साइड के अंदर ऑलरेडी. Deep inside the side, Pure finds one, Crash finds the second one, and that's going to be the easy second round coming for the sides of KGO. Well, it's definitely not looking like the colors that we were expecting from the side of old man young man, क्योंकि जिस तरह से इनको पिछली बार खेलते हुए देखा था, they did qualify for the first two rounds. इस बार इनकी हालत थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल भरी लग रही है. KGO is already making quite some mark, and इसी के साथ एक और फ्रैग KGO की तरफ आता हुआ. Old man young man still looking for their initial round. Master Fella good for one, yes he is. Crashed versus Master Fella is what the situation looks like. 1-for-1 trade काफी ज़्यादा अच्छा था यहाँ पे, but bomb plant हो चुका है and Wow. instantly take down करेंगे. Third round on board for the sides of KGO. The fact that they are on the T side and उसके बावजूद भी आप देखिए टेरर साइड पे होके ऐसे बैक टू बैक राउंड्स निकाल रहे हैं, ये चीज़ कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है यंग मैन ओल्ड मैन को. थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस चीज़ पे, बिकॉज again going down to the CT side it's going to be more flexible I would say for these players. But देखते हैं this time over Pure has been brought down to 75 of his health, but he somehow manages to find one on tank, and it all goes down to Master Fella being the last one to survive. 1 versus 1 is what it looks like. Slowly and slowly trying to make his way inside towards the pillar. Master Fella finally shuts him down. Perfect timing for him, and old man young man finds the very first one on board. That's true, and I'm quite excited about that. लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत crucial रहने वाली है दर्शिता, that is that this is not one of the rounds that can be replicated. यहाँ पर mostly ओल्ड मैन यंग मैन को जो फ्रैग्स मिले हैं, दैट इज़ बिकॉज उनकी तरफ ध्यान नहीं था उस पर्सन का जो उनको फाइट कर रहे थे. लाइक इट वाज स्टिल अ शॉट इन द ब्लैंक, एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ का फ़ायदा मिला ज़रूर ओल्ड मैन यंग मैन को, पर बार बार अपने आप को कंसील्ड रख के फाइट ले पाना पॉसिबल नहीं होने वाला है. सो आई गेस जो ओवरऑल वेटेज है इस पर्टिकुलर मैच के अंदर, वो काशगो के पास ही रहने वाला है. Yeah, that's going to be true. Tactical timeouts यूज किए जा रहे हैं यहाँ पे. स्लो डाउन, वो जानते थे कि गलती हुई थी वहां पे, एंड वो गलती दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते हैं. उस चीज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान जरूर देंगे, बट देखना ये अभी कि किस तरीके से आगे बढ़ता है. फिलहाल के लिए अगेन क्रूशियल राउंड रहने वाला है. आई ऑल्सो एट द सेम टाइम फील कि जितने राउंड्स इन्हें चाहिए थे इन द फर्स्ट हाफ, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट कार्ड्स गोइंग इन, उन्होंने ऑलरेडी सिक्योर कर लिए. गोइंग डाउन टू द सीटी साइड अगेन, it's going to be more flexible for them honestly, but let's see क्या होता है. फिलहाल के लिए अगर रीगल के ऊपर रिलाई किया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ प्योर. क्रैश के पास अभी भी एक एके रहेगी, सो अगेन देखना ये. ओके, एकेस फ्रॉम बोथ दीज एंड. ऑफ कोर्स इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है दोनों भी प्लेयर्स के पास, बट देखना ये है कि OIF की तरफ से क्या कुछ रिवर्ट बैक है, बिकॉज आप देखिए इस तरीके से पीक किया जा रहा है. दिस टाइम अगर मोलोटॉव यूज़ किया है वो जो पुश है उसे रोकने के लिए, but for now peak might just come in from the sides of tank, shuts him down. That's going to be Pure done for.
क्रैश आखिरी बचे हुए खिलाड़ी 1 वर्सेस 2 एंड कोई डैमेज नहीं दिया गया है यहाँ पे फेला को भी, सो थोड़ी सी दिक्कत वाली चीज हो सकती है क्रैश के। ये जो सिचुएशन है क्रैश के लिए काफ़ी अच्छी तो लग नहीं रही है बिकॉज ऑफ द वे ही इज सैंडविच्ड बिटवीन बोथ द प्लेयर्स। आइसोलेट कर पाए हैं फाइट को काफ़ी अच्छे से एंड वेल कहीं ना कहीं ये जो होल्ड बैक है ओल्ड मैन यंग मैन की तरफ से वो उनको भारी पड़ता हुआ लग रहा है। दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू गेट देयर हैंड्स डर्टी एंड एक्चुअली मेक इट वर्क, बट अब ये जो आइसोलेटेड फाइट है इनमें तो पूरा विक्ट्री मिल जाएगा। ऑफ गार्ड पकड़े गए फिर भी फ्रैग ले गए। That's gotta be true. Trying to go in for the utils, वो आगे बढ़ रहे थे, आई गेस स्मोक या फ्लैश का इस्तेमाल कर रहे थे वो वहां पे, बट वो 1v2 निकाल के लेके जाएंगे। एंड ये जो पुश किया गया था अपने ही स्मोक को डिसरिस्पेक्ट करके टैंक ने जिस तरीके से आगे पुश किया था, अभी या दैट वाज अ स्मोक, उन्होंने उसे इस्तेमाल इस तरीके से किया था कि वो पुश थ्रू कर पाए, बट अगेन दैट जस्ट डिड नॉट वर्क इन हिज फेवर। टाइमिंग बहुत ज्यादा अच्छा था उनके लिए, बट कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे एंड केजीओ एक और राउंड निकाल के लेके जाएगी। 3 राउंड केवल बचे हैं पहले हाफ में अभी भी। लेट्स सी इफ देयर इज समथिंग दैट कैन बी चेंज। काफी अच्छा होल्ड टैंक को आप देखिए, सिचुएशन एक्सपेक्टेड नहीं है बट अगर पिक्सेल्स दिख गए तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टिल टैंक समहाउ मैनेज्ड टू फाइंड वन ट्रेड आता हुआ यहाँ पे प्योर की तरफ से। एंड नाउ मास्टर फेला इज ट्राइंग टू सर्वाइव, relying on to his deagle. Let's see if he is able to find this frag Ahana. लेट्स सी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है बिकॉज जिस तरह से अप्रोच आ रहा है प्योर की तरफ से लग नहीं रहा कि यहाँ पे मास्टर फेला के पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहेगी, बट इफ ही इज एबल टू सक्सेसफुली फ्लैंक दिस थ्रू देन ही हैज़ अ शॉट। अब तक मेरे ख्याल से ऑलरेडी केजीओ को भी अंदाज़ा आ जाना चाहिए कि दिस इज गोना बी अ फ्लैंक। Yep, Master Fella finds one onto Pure and that is going to be a run for them. Enough of time है उनके पास डिफ्यूजल के लिए, भले ही डिफ्यूजल किट ना हो बट टाइम काफी ज्यादा ऑलरेडी है उनके पास कि वो डिफ्यूज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड राउंड भी आ जाएगा यहाँ पे, 4-2 का ये स्कोर लाइन है अभी भी। मैं कहूंगी कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है कि इसे एक अच्छे स्कोर लाइन के साथ खत्म किया जा सकता है फ्रॉम द साइड्स ऑफ यंग मैन ओल्ड मैन यंग मैन, बट देखना ये कि क्या कर पाते हैं यहाँ पे। बट साइड ऑफ केजीओ ऑलरेडी अ गुड स्टार्ट एज आई सेड प्रीवियसली हो चुकी, काफी एक अच्छा स्टार्ट ऑलरेडी उनके लिए हो चुका है। अब थोड़ा बहुत अगर एक राउंड भी और मिल गया तो वो सील द डील वाला सीन हो जाएगा उनके लिए आना। एब्सोल्युटली ये एक्सपीरियंस एंड एजिलिटी का कॉम्बिनेशन कितनी देर तक इन्हें बचा के रखेगा दैट्स व्हाट वी हैव टू सी। 1v1 का सिचुएशन, प्योर के ऊपर शॉट्स, लेकिन मास्टर फेला वंस अगेन ब्रिंगिंग द गेम बैक टू हिज टीम। ये जो क्लोज करने की कोशिश थी स्कोर लाइन को वो काफ़ी अच्छे से कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है ओल्ड मैन यंग मैन के लिए। Once again 3-4 KGO, अच्छा खासा अभी भी एडवांटेज है उनके पास। हाँ, ओल्ड मैन यंग मैन किस तरीके से राउंड्स निकाल रहे हैं। अब तो एक ऑप आ चुकी है टैंक के हाथ में, ये और भी ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। टैंक के अंदर एंट्री मिल जाने वाली है, बट चलिए अच्छा फ्लैश उसके ऊपर कैपिटलाइज किया, किया, बट अभी भी टैंक के पास रहेगी एक ऑप, से बच के मौका है क्रैश के आगे जा सकते हैं प्लांट के लिए। बट चलिए टैंक ऑलरेडी नीचे कूद चुके हैं, लेकिन डज ही नो कि पोजीशनिंग क्या है एंड उसका फायदा उठा के यहाँ पे केजीओ 5वां राउंड सिक्योर करेंगे। 5-3 केजीओ एक बहुत अच्छे फर्स्ट हाफ को समाप्त करती हुई। एट द सेम साइड अगर मैं बोलूँ यंग मैन ओल्ड मैन के लिए 3 राउंड सिक्योर करें, अगर पिस्टल निकालते थे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इक्वलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े। एब्सोल्युटली एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और चीज़ भी हुई लाइक ओल्ड मैन यंग मैन गॉट थ्रोन ऑफ वेरी इजीली। केजीओ ने यहाँ पर स्मोक डाला, कोशिश करी कि मास्टर फेला को फील हो, सॉरी टैंक को फील हो कि स्मोक के अंदर प्रेजेंट होंगे प्लेयर एंड टैंक अपने आप को वल्नरेबल करें एंड वही करते हुए वो दिखाई दिए। बट बीइंग ऑन द सीटी साइड 1v1 का दोबारा सिचुएशन बना है एंड केजीओ के लिए दोबारा जीत का पोजीशन भी बना है। क्रूशियल राउंड था ये बहुत ज्यादा एंड उसके ऊपर कैपिटलाइज करके जाने वाली है। चलिए बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पे कि इक्वलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े अंटिल एंड अनलेस हमें कार्को की तरफ से कुछ अलग चीजें यहाँ पे देखने को मिले। ओनली इफ दे आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस राउंड तो इक्वलाइजेशन को मना किया जा सकता है, बट देखना ये कि क्या वो कर, जिस तरीके से साइड एंट्री यहाँ पे मिल रहा है ओल्ड मैन यंग मैन को तो प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ऑलरेडी ट्राइंग टू मेक देयर वे इनसाइड फ्रॉम द शॉट, जानते हैं क्या है मॉन्स्टर की तरफ कोई भी प्लेयर ऐसे होते हैं तो देखिए नहीं अभी फ्रैग को पहला फ्रैग मिला, फिर आया जरूर मास्टर फैला तो भी प्लेयर्स को टेक डाउन करके जाएंगे। एंड इक्वलाइजेशन की हम बात ही कर रहे थे, वो होता हुआ अभी 5 ऑल का स्कोर लाइन।
स्टार्टिंग से ही यहाँ पर टैंक का बेट होने का प्लान था। वो ऑलरेडी वेपनरी में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट किया नहीं था। ही जस्ट वांटेड टू डील सम डैमेज, रश कर लिया सीधे अग्रेसिवली, एंड जैसे ही उनको फ्रैग आउट करने के बाद में दोबारा फाइट में वापस आने की कोशिश की केजीओ ने, तो मास्टर फेला वाज स्टैंडिंग एट द राइट एग्जैक्ट पोजीशन टू बी एबल टू कन्वर्ट दोज इनटू फ्रैग्स फॉर द साइड ऑफ ओवाईएम। ब्यूटीफुली डन, बट ये चीज़ अगेन वन ऑफ दोज राउंड्स व्हिच इज़ हार्ड टू रेप्लिकेट। तो देखना पड़ेगा कि कितनी बार ऐसी नई चीज़ें लेके आ पाएंगे ओल्ड मैन यंग मैन। गुड स्मोक फॉर नाउ। एंट्री लेने का प्रयास किया जा रहा है। ये राउंड बहुत ज्यादा क्रूशियल है केजीओ के लिए, बिकॉज अगर ये राउंड हारते तो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक ये चीजें हो सकती है। बट चलिए पहला फ्रैग आता हुआ प्योर की तरफ से, टैंक को टेक डाउन किया ना, अब सोलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मास्टर फेना के हाथों में। हाँ, पिछले राउंड में क्लच जरूरी किया था, बट दिस टाइम ओवर इट सीम्स टू बी अ बिट डिफिकल्ट। छठा राउंड यहाँ पे सिक्योर कर लिया, ऑलरेडी जा चुका है केजीओ स्लोली एंड स्टेडी। 3 राउंड चाहिए उन्हें इस सीरीज को यहीं पे समाप्त करने के लिए। यप, एंड ओल्ड मैन यंग मैन को कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यू गिमिक्स को लाते रहना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली इनटू द प्ले टू बी एक्चुअली इवन स्टैंडिंग अ चांस टू विन। क्योंकि जिस तरह से वो खेल रहे हैं एम गेम के मामले में, तो ऑलरेडी हमें केजीओ ज़्यादा भारी दिखाई दे रही है। That will be true. For now at least एक राउंड का डिफरेंस अभी भी है। केजीओ के पास एक अच्छा लीड है, so it just feels like they might maintain it. Yes, they are able to do that. Sure, बहुत अच्छा फ्लैग निकालेंगे एंड इन अ टैंक आखिरी बचे हुए खिलाड़ी। 5-7 की तरफ ये स्कोर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, बिकॉज टैंक कहीं ना कहीं मैकेनिकली थोड़े से ज़्यादा शॉर्ट फॉल करते हुए दिखाई दिए थे कंपेयर टू मास्टर फेला, एंड उनके ऊपर ये गेम टिकना थोड़ा मुश्किल रहना ही था। विद दैट 2 राउंड लीड इन हैंड, अपने आप को मैच पॉइंट की तरफ मार्च करते हुए दिखाई देने वाले कैश गो के प्लेयर्स। That's gonna be true. And this time over मेरे को उम्मीद है थोड़ी सी कम है, honestly from the sides of OIF, because आप देखिए एक ही वेपन के ऊपर इन्वेस्ट किया गया, एक ही AK के ऊपर इन्वेस्ट किया गया है। That does not seem to be a good idea to me. मास्टर पहला फ्लैग जरूर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, उन्होंने डबल डिजिट ऑलरेडी लाके दिए है, बट सिंगल हैंडेडली मैच को जिताना थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है। करके काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, पोजीशनिंग पता है, जैसे ही बाहर निकलेंगे डिनाई किया जाएगा। Once again, Master Pele is the last one to survive. Finds one second one. My goodness, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था ये राउंड निकालना, वो राउंड निकाल के लेके जाएंगे। आप देखिए किस तरीके से दोनों भी प्लेयर्स को वहाँ पे डिनाई किया। सेकंड वाले का फ्रैग निकलना, I guess was something no one expected, but still he was able to do that, Ahana. Yep, but he does have to make sure that he's able to deliver the same kind of performance over and over, वरना इसको हार्ड वर्क नहीं लक का नाम दे दिया जाएगा। Tank is lost again, and it's again a clutch situation for Master Fella. True though. Master Fella is slowly and steadily trying to बट चलिए पोजीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है उनका। 8वां राउंड निकाला, मैच पॉइंट पे लेके आ चुके हैं ऑलरेडी केजीओ। ऑनेस्टली टैंक का यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाना कहीं ना कहीं पे ओल्ड मैन यंग मैन के लिए प्रॉब्लम बन रहा है, बिकॉज आप देखिए एवरी सिंगल राउंड हमने ये चीज ऑब्जर्व करी है दैट मास्टर फेला इज ऑलवेज द लास्ट वन टू सर्वाइव। आहाना ट्रू दैट, एंड टैंक का इतनी जल्दी बली हो जाना कहीं ना कहीं मास्टर फेला को बहुत ज़्यादा प्रेशराइजिंग सिचुएशंस में रख रहा है। इफ नॉट द गन पावर देन एटलीस्ट द मैन पावर, कुछ ना कुछ तो सपोर्ट यहाँ पर टैंक की तरफ से चाहिए ही होगा टू टर्न दीज रिजल्ट्स अराउंड। प्लेयर्स एक साथ आगे बढ़ रहे थे, सीम्स टू बी डिफिकल्ट 1-for-1 ट्रेड। आखिरी बचे हुए खिलाड़ी मास्टर फेला वंस अगेन, माय गॉड दिस मैन इज बिल्ट डिफरेंट। हर बार भी वक्त आपको उम्मीद नहीं रहती कि क्लच करके जाएंगे, ये बंदा क्लच करके जाता है। आप देखिए फिर दोबारा से वो राउंड निकाला, वन लास्ट राउंड। क्या 8 ऑल का स्कोर होगा? मास्टर फेला टू बी अ बिट अवे फ्रॉम द गेम। चलिए वापस आ चुके हैं, टैंक लीडिंग द चार्ज दिस टाइम दो, आगे बढ़ने का प्रयास जरूरी कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज टैंक का आगे जाना कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। काफी ज्यादा अच्छा प्योर राइट अराउंड द कॉर्नर एंड टैंक शट्स हिम डाउन। Then with a perfect trade, Master Fella finds around to catch the score and equalizes 8 all, ladies and gentlemen, something we never expected.
टैंक इज अ वॉकिंग शील्ड। मास्टर फेला लिटरली टैंक का इस्तेमाल डैमेज अब्सॉर्ब करने के लिए कर रहे हैं। ही वॉक्स इनटू अ फाइट, ही नोज ही इज बेटर केपेबल टू गो अहेड विद दोस गन्स एंड ही इज जस्ट मेकिंग श्योर दैट टैंक अब्सॉर्ब्स एज मच डैमेज एज पॉसिबल बिफोर द बुलेट्स स्टार्ट हिटिंग हिम। 15 फ्रैग्स मिल चुके हैं इन्हें। ही इज डेफिनेटली डूइंग ग्रेट फॉर हिमसेल्फ। दोनों भी तरफ से ऑफ देखने को मिल रही है इस बार तो, प्योर एंड टैंक दोनों भी ऑफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर इंटरेस्टिंग रहेगा ये चीज। टैंक की तरफ से मैं देखना चाहूंगी कि ऑफ से किस तरीके के वो फ्रैग्स निकाल पाते हैं। नाउ मास्टर फेला इज होल्डिंग बैक अ पोजीशन, वो वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये मॉली पुश को थोड़ा सा प्रिवेल जरूरी कर देगी, बट अभी के लिए मास्टर फेला वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट फ्लैश एंड स्मोक, एवरी सिंगल थिंग दैट ही कैन डू फॉर हिज टीममेट। बट अब वो जानते हैं कि वहां पे ऑप लगी हुई है और उसको अगर पीक करना है तो फिर उस ऑपर को या तो फ्लैश करना पड़ेगा या तो स्मोक का एक परफेक्ट लाइनअप चाहिए रहेगा। यप, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ को जीत में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरत रहने वाली है मास्टर फेला को टू गो फॉर द परफेक्ट शॉट्स, बट ही मिस। शॉट काफी ज्यादा अच्छा था दो प्योर की तरफ से, ना कि सिर्फ एक प्लेयर True. बट दोनों को डिनाई किया। For now 8-9 lead to the sides of KGO again. दिस राउंड ओवर क्या प्लान रहेगा दोनों भी प्लेयर्स की तरफ से। आगे बढ़ने का प्रयास तो किया गया, फ्लैश काफी अच्छा है, के पास जो एंगल है वो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, बट शॉट नहीं कनेक्ट कर पाए पहले वाला। 1 for 1 ट्रेड वंस अगेन। अभी भी सिचुएशंस कंप्लीट नहीं हुए, प्योर इंतजार कर रहे हैं वहां पे, एटलीस्ट वन मे बी। फेला विल बी गोइंग इन फॉर द प्लांट, बॉम्ब प्लांट हो चुका है, डाउन टू द सिचुएशन, पिक्सेल्स विजिबल है, फिर भी कैपिटलाइज नहीं कर पाएंगे प्योर उस पे। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा है मुझे प्योर के लिए, ग्रेनेड भी आगे जाता हुआ तो इज द केस विद स्मोक, बट काउंटर ग्रेनेड बहुत ज्यादा अच्छा आता हुआ। आना, व्हाट डू यू थिंक? I think Master Fella has one more round to win right now. And he does, he does. I did not want to see him getting out of his cover to be honest, क्योंकि यहाँ पर एक काफी अच्छा adjustment आया है from the side of KGO. They know Master Fella is using tank as the shield, तो उन्होंने अपना overall distance बढ़ा लिया है दोनों से, ताकि उनको fight करते समय एक के बाद एक choose ना करना पड़े and they can just go in for the fight with a weaponry like op. It was a good position. बट जिस तरह से उस चीज़ में अपने आप को प्लांटिंग पोजीशन पे लाके ओल्ड मैन यंग मैन ने एक सिचुएशन क्रिएट की थी जहाँ पर फोर्स किया था ऑलमोस्ट प्योर को कि वो अपनी ऑप को लेकर एक क्लोज रेंज बैटल के अंदर आए। दैट साउंडेड गुड, बट द शॉट्स वर नाइस एज वेल। फॉर नाउ 9 ऑल का स्कोर लाइन है, 2 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स चाहिए, बट मास्टर फेला जो कि वो कितनी ज्यादा उम्मीदें अलाइव रख रहा है आप देखिए ओल्ड मैन यंग मैन के लिए। है ना, ऐसा लग रहा है कि टैंक भी सोलियन स्टडी स्टेपिंग अप, शॉट की तरफ से पुश करता हुआ, फिर प्लेयर्स ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं, क्रॉसिंग चेक करना इंपॉर्टेंट है। फ्लैट बहुत ज्यादा अच्छा था, बट सिर्फ लाइन में वहां पे टेक डाउन करेंगे, बट प्योर एक नहीं दोनों भी खिलाड़ियों को टेक डाउन करके फिर दोबारा से ये राउंड सिक्योर करके जाने वाले हैं फॉर द साइड्स ऑफ केजीओ। टाइमिंग जो प्योर ने पकड़ी यहाँ पे, आई मीन द वे प्योर रीलोकेटेड हिमसेल्फ एंड जो टाइमिंग उन्होंने पकड़ी, कहीं ना कहीं मास्टर फेला मिस आउट कर गए कि प्योर ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं एंड ही हैड एन आइडिया बोथ द प्लेयर्स आर ऑन द अदर साइड, एंड उसी चक्कर में कहीं ना कहीं इस फाइट को हाथ से धो बैठे। Oh well, the scoreline does look good for the side of KGO. Yep, might just go another overtime, you never know. इस तरीके की चीजें चल रही है। पिछले राउंड में एक दोनों भी प्लेयर्स को डिनाई करके प्योर ने वो राउंड सिक्योर जरूर किया था, बट दिस टाइम ओवर उन्हें फिर दोबारा से वो करके दिखाना पड़ेगा। मास्टर फेला पोजीशनिंग इज वेरी गुड, जैसे पीक करेंगे डिनाई किया जाएगा एंड फिर दोबारा से 10 ऑल का ये स्कोर लाइन। दिस जस्ट सीम्स टू बी अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी, यू नो, दिस सीम्स टू बी अ नेवर एंडिंग लव स्टोरी। ये नहीं रुकने वाला है, ये चलते जाने वाला है। Definitely. The way both of them are constantly chasing after each other. This has to be epic. 18 frags for the side of Pure and 19 for Master Fella, and इस सिचुएशन में दोनों ही आई गेस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो अपने विंगमैन को भर रहे होंगे। Oh well, for now काफी ज्यादा लो किया जा चुका है। Now this round decides a lot of things.
बिकॉज केजे के लिए राउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है। फिलहाल के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, टैंक को काफ़ी ज़्यादा लो किया गया वहाँ पे, ब्रॉट डाउन टू 34 ऑफ हिज हेल्थ, बट प्योर इज barely breathing, I mean he's down to 7, सो थोड़ा सा क्रूशियल है, आराम से खेलना पड़ेगा। मास्टर फैला के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जा सकते हैं, यू नो ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग शोल्डर टू रिलाई ऑन टू, बट अगेन द क्वेश्चन इज फॉर हाउ लॉन्ग। फिलहाल के लिए वेरी स्लो अप्रोच कमिंग अप फ्रॉम द साइड्स ऑफ केजीओ, slowly and steadily trying to march their way inside, maybe from the other way around, but टैंक का जो पोजीशनिंग है राइट साइड का वो थोड़ा सा एंटिसिपेट करना पड़ेगा क्रैश को, बिकॉज अगर वो नहीं करते हैं तो सकती है, बट चलिए एंटिसिपेट Ooh. किया। मास्टर फेला ने प्योर को जैसे ही टेक डाउन किया, क्रैश की तरफ से टैंक को टेक डाउन किया गया वहां पे, एंड अप इट ऑल गोज डाउन टू क्रैश वर्सेस मास्टर फेला। क्रैश barely surviving 17 HP एंड अ ड्रीम क्लच मे बी जो नहीं निकाल पाएंगे, एंड फाइनली यंग मैन ओल्ड मैन 11वां राउंड सिक्योर करेंगे। Well, the situation is going on getting better and better for the side of old man, young man. जिस तरह से गेम स्टार्ट हुआ था हमें कहीं ना कहीं उम्मीद नहीं लग रही थी कि ये अपने आप को इवन एक इक्वलाइज सिचुएशन तक ला पाएंगे. एंड नाउ लुक एट देम पुशिंग फॉर ओवर टाइम्स आफ्टर ओवर टाइम्स. Fortified reinforcements from the side of old man, young man, still waiting for the push from the side of KGO. और पकड़े जाने चाहिए. अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है. Oh wait, I guess it's gonna be a young man old man game now. जैसे ही वहां पे प्योर को डिनाई किया गया, चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली ना, अंटिल एंड अनलेस क्रैश के 1v2 नहीं निकालते हैं, चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है ना. फोल्ड देख किस तरीके से रखा गया ओल्ड मैन यंग मैन की तरफ से, दोनों भी कॉर्नर्स पे चेक किया जा रहा है, बट दे नो वेयर ही इज. क्या somehow finds on to Ferrana, this is very doable. अगर टैंक को भी यहाँ पे टेक डाउन कर लेता है क्रॉसिंग का ध्यान रख के, शायद ये राउंड सिक्योर कर पाए. वाइट भी गाता हुआ क्रैश फाइंड्स another one, that's going to be the 11th one. My goodness, this is a love story between both of these teams. कोई भी जाने नहीं देना चाहता है इस मैच को. 11-11 Ahana. Okay, Ahana, I have a very quick question to you. What scoreline do you predict? और कितने ओवरटाइम हमें देखने पड़ेंगे इस मैच को खत्म करने के लिए? I think 14 will be the last that we see a team go to. And I think it's gonna be Oh, yeah. It was barely breathing. Crash के पास 4 HP बची थी पिछली बार while he won. 4 HP पे जीते हैं वो. My God. बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है ये मैच, बट चलिए मास्टर फेला को पहला पिक मिलता हुआ, मैच को टेक डाउन किया प्योर विद द ऑप, राइट प्रेजेंट अराउंड द कॉर्नर, ट्रिपल नेट की तरफ जरूर रहेंगे वो. यहाँ पे एंगल काफी अच्छा है ऑनेस्टली, एंड आई गेस आइडिया भी है इस चीज का, बट पहले शॉट मिस कर जाएंगे पहला वाला. अब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, इजी प्लान रह सकता है ये फॉर द साइड्स ऑफ ओल्ड मैन यंग मैन, एंड फ्लैश तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है यहाँ पे प्योर का ये राउंड क्लच कर जाना, बट फिर भी फाइंड वन टू टैंक. मास्टर फेला इज द लास्ट वन टू सर्वाइव नाउ. प्योर को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आगे बढ़ेंगे मास्टर फेला. दैट्स गोना बी द 12th वन ऑन बोर्ड. माय गुडनेस, दिस मैन खा के आए हैं यार आज, या तो फिर ऐसा लग रहा है कि बस बिना कुछ खा के आ चुके हैं, बिकॉज ही इज जस्ट ईटिंग हिज अपोनेंट अलाइव राइट नाउ. That he is. The hunger on this team is wild. देखना होगा किस तरह से ये राउंड जाने वाला है, बिकॉज इस बार टेररिस्ट साइड पे ऑप लेकर आए हुए हैं, वो भी टैंक के हाथों में. आई हैव माय डाउट्स अबाउट द डिसीजन, बट लेट्स सी. प्योर को देखिए आप वहाँ पे, not that great of a weapon, at least Oh, for long goodness. range. Close range में आप रिलाई कर सकते हो उसके ऊपर आना. ट्रू. आगे आएंगे जरूर, टाइम का दिया था वहाँ पे एक फ्रैग निकालने का, बट नथिंग फॉर नाउ. क्लोज नेट डैमेज जरूरी देगा, बट प्योर रिस्क ना करके बेहतर रहेगा. ये जो एंगल नाइसली डन. प्योर नॉट जस्ट वन, दोनों भी फ्रैग्स को यहाँ पे निकाला उन्होंने. डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस राउंड टू एंड दिस व्हेन इट्स अ 12 वॉल स्कोर लाइन. 24 राउंड्स हम लोग ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं, एंड दिस इज नॉट अ विंगमैन एनीमोर. ये ऑलरेडी CS2 का पूरा मैप हो चुका है यहाँ ना, एंड वी स्टिल आर नॉट एबल टू फाइंड आउट हु द विनर इज. Exactly. Pure was purely brilliant in the last round, man. I mean,
Of all things, he was the one person I was not expecting to get frags. But he did. And he did it magnificently. I'm not predicting anything honestly. अब मैंने prediction करना छोड़ दिया है इस मैच के लिए because अब मुझे नहीं पता कि कहाँ जाके ये मैच समाप्त होने वाला है. और now टैंक वहाँ पे डिनाई किया जा चुका है. मास्टर पहला लो दो पहली सर्वाइविंग एक गोली काफी होगी. एंड फाइनली बहुत टाइम के बाद ऐसा लगा कि पहला राउंड जो कि ओटी का पहला राउंड है वो काश गो ने निकाला है. Now this is going to be very crucial Exactly. again. Yep. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समय हो चुका है काशगो को एडवांटेज पे रहते हुए. They haven't Yeah. seen that happen in a while and suddenly now that it has, I feel like यहाँ पर एक बहुत अच्छा confidence boost आता हुआ दिखाई दे सकता है काशगो के लिए. बट थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलना पड़ेगा बिकॉज इफ दे वांट टू एंड दिस हियर एंड हियर उनको पेशेंस रखनी पड़ेगी. यू नेवर नो इफ इट ऑल गोज टू अनदर ओवर टाइम. यंग मैन ओल्ड मैन क्या नया स्ट्रेटजी लेके आए. बट लेट्स सी फॉर नाउ. नेट जा चुका है. टैंक को थोड़ा सा डैमेज जरूरी देगा मास्टर फेला. वो के अंदर पेशेंटली वेट कर रहे हैं वहां पे. इंतजार किया जा रहा है उनकी तरफ से. अब दो एंगल चेक किए जा रहे हैं क्रैश की तरफ से एंड दैट शॉट. आई गेस द स्टोरी लाइन इज डन ऑलरेडी. आई गेस हम जानते हैं कि इस मैच का नतीजा क्या है. मास्टर पहले आपको वेट कर रहे हैं आपने स्पॉट जरूरी किया एक पेयर को बट नहीं. बहुत अच्छा ट्राई किया गया यहाँ पे यंग मैन ओल्ड मैन की तरफ से. बट इट ऑल गोज डाउन टू द साइड्स ऑफ काशगो who will win this best of one series. बहुत ही अच्छा कोशिश फिर दोबारा से मैं कहूँगी यहाँ पे हमें देखने को जरूर मिला. बट चलिए इस हाफ में तो एक अच्छा स्कोर लाइन के साथ लीड लिया है. अब बारी आ चुकी है आगे जाके एक राउंड निकाल के वो लीड. बिकॉज अगेन वी नो अगर यहाँ से वो लीड ले ली तो द डील इज डन. वो सील वो स्टैंप लग जाएगा. Yep. एग्जैक्टली यहाँ किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा एंड आगे ले ही जाना पड़ेगा. They've already lost a player though and old man young man is looking good for this one. Entry point ही concealed है यहाँ पे कहीं ना कहीं. Even Pure is soaking in a lot of damage. Pure the last one to survive again 1 versus 2. जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे आना वहां पे सीधा स्मोक आ गया. डिसीजन चेंज कर लिया उन्होंने. टैंक को टेक डाउन किया पहला. इज द लास्ट वन टू सर्वाइव अगेन. टेक डाउन करेंगे पहला उन्हें भी. अभी भी गिव अप नहीं किया गया है उनकी तरफ से. 13-14. We are very close to finding who the winner is and yet so far. Yeah. ये एक और राउंड अगर OYM की तरफ जाता है तो दोबारा से एक इक्वलाइजर हमें देखने को मिलेगा. चलिए और नाउ प्योर को शट डाउन किया बट एक ट्रेड आया क्रैश की तरफ से. मास्टर फेला इज डन फॉर टैंक. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर. अगर ये वाला राउंड निकाल के जाते हैं टैंक तो यू नो कितना ज्यादा क्रूशियल और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. बट अगर केजीओ निकाल के जाती है ये राउंड तो वो स्टैंप लग जाएगा जिस चीज की मैं बात भी कर रही थी. बॉम्ब ड्रॉप हुआ जरूर है बट रिट्रीव कर लिया जाएगा इजीली. ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं. ऐसा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पे. क्रैश करके अराउंड द कॉर्नर बट टैंक शट्स हिम डाउन. 3 ऑल. माय गॉड ये ओवरटाइम्स कहने का नाम नहीं लेंगे एंड फिर दोबारा से 14 ऑल का ये स्कोर लाइन हमें देखने को मिल जाने वाला है. आना एनी प्रेडिक्शंस अगेन. No more. I give up. But yeah, I mean, the fact that Tank को frag मिला, it itself was surprising. I'm sorry, but like, जिस तरह से इनका gameplay चल रहा है, most of the heavy lifting is being done by Master Fella when it comes to taking frags, right? तो एक clutch situation के अंदर Tank को imagine करके ये सोच पाना कि वो equalizer दिला पाएंगे was slightly difficult. But the way he has delivered, that's exactly what your wingman is supposed to do. Okay, all right. Interesting rounds coming up from both the ends. So for now it's 14-14. देखना ही है कि और 3 rounds कौन कर पाता है यार. Tank another perfect spray down, but चलिए
कोई दिक्कत नहीं, क्रैश ने वहाँ पे उन्हें टेक डाउन कर लिया ऑलरेडी। मास्टर पहला फाइंड्स वन, ट्रेड आता हुआ एंड दैट्स गोना बी yet another opportunity for old man young man to get an equalizer. Let's see if they do. Let's see if they do. काफी सारी यूटिल से भरपूर दिखाई दे रहे हैं मास्टर फेला. However, not so much can be said for tank, and I guess he is still gonna be, fulfilling the role of a shield, but he gets the frag. Already numbers यहाँ पे advantage में लेके आए थे. Obviously, he did get traded, but he got the advantage for the team at a crucial point. And अब ये OYM का long flank. This is gonna be dangerous. Master fella, but you cannot. Oh, this seems not the best idea. Not a 14-16, but definitely a 15-15. Master fella doing what he is best at. 28 kills already. आप देखिए उन्हें, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे यहाँ पे. 28 किल पे बैठे हैं वो, एंड सिंगल हैंडेडली जिस तरीके से इस मैच को संभाला है उन्होंने, माय गॉड. चलिए 15 ऑल का स्कोर लाइन ऑलरेडी हो चुका है. देखना ये कि किस तरीके से चीजें और आगे बढ़ती है. Exactly. Overall पूरे रोस्टर में बेस्ट केडी यहाँ पर मास्टर फेला का देखने को मिल रहा है. किल टू डेथ रेशियो, क्योंकि प्योर डज हैव अ गुड नंबर ऑफ फ्रैग्स टू हिमसेल्फ, बट 24 to 21 का रेशियो है उनका, विच इज नॉट एज फैसिनेटिंग एज 28 to 16. अब कहीं ना कहीं मन में वो बायस आ रहा है, दैट ओल्ड मैन यंग मैन को जीतते देखने का मन हो रहा है. See, फिलहाल के लिए तो 15-15 का जो स्कोर लाइन है वो अभी के लिए तो देखने को जरूर मिल रहा है. प्योर हैज बीन ब्रॉट डाउन टू 70 ऑफ हिज हेल्थ, तो थोड़ा सा आराम से खेलना पड़ेगा. पोजीशनिंग अच्छी जरूरी है, बट आई वुड स्टिल से एक्सपेक्टेड है काफी ज्यादा, बिकॉज हमने देखा है उन्हें बार बार पोजीशन के ऊपर खेलते हुए. मास्टर फेला निकलना पड़ेगा वहां से. He was burned alive, and though he's able to take down the player who burned him alive. Oh my god, tank. Last one to survive. Not really sure if he'll be able to make it. No is the answer. And it all goes down to another round for the sides of Kashko. He was just looking in the wrong direction. टैंक को हल्का सा अंदाजा यहाँ पर होना चाहिए था कि काशको के प्लेयर्स किस जगह पे स्थापित मिलेंगे, because again you did have slight bit of an idea of what just happened. This could have been a different story. टैंक जलते भुनते हुए रोस्ट होते हुए निकले चले जा रहे हैं अब. Oh no. चलिए प्योर की तरफ से पहला फ्रैग आएगा. क्रैश फाइंड्स अनदर वन टू मास्टर फेला. 15 and 17. माय गॉड, ये मैच 15-17. आई मीन हम बात कर रहे थे यहाँ पे विंगमैन सीरीज की, जो कि हमें 2v2 के इस रूप में देखने को मिलता है, बट imagine watching an entire CS2 copy match just like you are casting a wingman series already. My god. Exactly. But hats off man, young man से well legit यहाँ पे मास्टर फेला, hats off man. जिस तरीके से कोशिश किया सिंगल हैंडेडली इतना ज्यादा होल्ड करने का उन्होंने ट्राई किया, इतना ज्यादा ट्राई किया कि वो इस मैच को निकाले, बट एट द एंड वो चीज नहीं हो पाई. यस, कार्डको ने ये मैच निकाला जरूर, बट एज यू सेड काफी दिल वो पिछली बार भी जीत के गए थे, आई वुड से अगेन वो बहुत ज्यादा दिल जीत के जाने वाले हैं. Absolutely, the way they have played has been fantastic, and कहीं ना कहीं उनको देखने में जो एक अलग सा मजा आता है, that's gonna keep me hoping for the next ROG Showdown series happening in Chandigarh soon. Yeah, that's gonna be true. But talking about the next ROG, it will be happening very very soon. Be updated on our socials. I mean, हमारे socials को follow कर लीजिए ताकि आपको updates continuously मिलते रहे at the esports club को. But for now, ladies and gentlemen, that's it for today's stream. Thank you so much for tuning in. This is me, Darshita, and alongside me, it is going to be Anna. We are saying goodbye today because we can say oh hi tomorrow. We'll see you guys on the other side. Until then, take care. Have a good day. Bye.